लेजेंड्स रेडी मोबाइल GTA फास्ट को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर। गेम और सौमिक अपने स्टाइल से दबा के गेम पर पट्टी। तेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 4 चांद लगाए। गेम और सौमिक आज दूर है दिल में। प्रोफेसर सौमिक है सुपर गेमर। एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर। किली में आज तक ना देखे जान तेरे तहा गेम प्रोफेसर सौमिक के सुपरस्टार। एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर। गेम और सौमिक अपने स्टाइल से दबा के गेम पर पट्टी। तेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 4 चांद लगाए। गेम और सौमिक आज दूर है दिल में। प्रोफेसर सौमिक है सुपर गेमर। एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर। किली में आज तक ना देखे जान तेरे तहा गेम प्रोफेसर सौमिक के सुपरस्टार। एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर। गेम और सौमिक अपने स्टाइल से दबा के गेम पर पट्टी। तेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 4 चांद लगाए। गेम और सौमिक आज दूर है दिल में। प्रोफेसर सौमिक है सुपर गेमर। एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर।
दिल्ली में आज तक ना देखे जान तेरे कहा गेम प्रोफेसर सौमिक के सुपरस्टार इट्स लेजेंडरी मोबाइल GTA फास्ट को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर गेम ऑन सौमिक अपने स्टाइल से दबाते गेम पर पट्टी हेलो एंड वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कैसे हो सब लोग और कैसे चल रहा है सब लोग का दिन। तो आज आ चुके हैं फिर से हॉगवर्ट्स लेगेसी के साथ एंड आज प्लान है कि आज इसको ख़त्म कर देंगे। इसके मेन क्वेस्ट वगैरह जितने भी हैं, साइड क्वेस्ट जितने होंगे देखते हैं कितने पॉसिबल है, बट मेन क्वेस्ट आज ख़त्म कर देंगे एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी को कंप्लीट कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीकेंड को हम लोग एक नया गेम शुरू कर पाए। मोस्ट प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूँ माफिया का डेफिनेटिव एडिशन जो रिसेंटली फ्री में मिला है तो उसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा गेम खेलेंगे। माफिया कंपैरेटिवली छोटा गेम है, आई थिंक सो 3 स्ट्रीम्स में हो जाएगा। थोड़े लंबे स्ट्रीम्स रहेंगे तो आई थिंक हो जाएंगे 3 स्ट्रीम्स के अंदर, मतलब सैटरडे संडे और नेक्स्ट सैटरडे को। फिर उसके बाद और एक अलग गेम हम लोग ट्राई करेंगे। सो एनीवे गेम शुरू करता हूँ। फिनोमिनल वेलकम टू द स्ट्रीम। साइबरनेस वेलकम टू द स्ट्रीम। ट्राई वॉरफ्रेम। वॉरफ्रेम आई थिंक देयर इज अ कैंपेन ऑल्सो ना, उसमें कैंपेन भी है। ठीक है, बाद में देखता हूँ वॉरफ्रेम का। मुझे पहले कुछ जनों ने बोला था, तब तो मैं दूसरे गेम्स खेल रहा था इसलिए ट्राई नहीं कर पाया। एक मिनट देना, जस्ट इसका चैट सेटअप कर दूं। Yeah, many campaigns actually. Okay. Is it like similar to Destiny? Texted you on Discord about my problem. YT plugin and I replied to you. I asked you to join in also. Looter shooter but better. Yes. Okay. Phenomenal. मैं वही सोचा वाला, ये क्या सीन है। ओके हाँ, मेरे को भी आता है, कॉल्स आते हैं मुझे भी, वोट देना करके। धनुष बाण बाण को वोट दो, मराठी में आता है पूरा। आज तो मोदी जी का भी भाषण आ गया था। एनीवे मैं गेम शुरू करता हूँ। ये वाईटी प्लगइन वाला आई डोंट नो एग्जैक्टली, इफ यू कैन शेयर इट ऑन डिस्कॉर्ड देन आई विल बी एबल टू सी। को ऐसी भी दिख रही है। हाँ तो वो उनका स्पॉन्सरशिप है, मुझे थोड़ी मिल रहा है स्पॉन्सर। ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे मुझे पैसे मिल रहे हैं उसके। अरे ये अटक जाता है। कल मैंने सही किया था, गेम शुरू करके फिर मैंने OBS स्टार्ट किया था तो इश्यू नहीं हो रहा था। अभी मैं शायद खुद भी जल्दी। मेरा वॉइस आ रहा है क्या प्रॉपर? वैसे वेबकैम भी अटक रहा है। ओके नॉर्मल हो गया अभी।
थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो लोड लेता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। सर जी तो ये स्पॉन्सर्ड क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया है, शिवसेना वालों ने स्पॉन्सर किया, दैट इज व्हाई। अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगा तो मैं थोड़ी ना ऐसा करूंगा कि मेरे जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है उसको इंटरप्ट करके थोड़ी ना चलेगा। Now for the rest of you. सर जी इतने जल्दी लाइव कैसे? कल बोल दिया था मैं कि जितना जल्दी हो सके मैं करूंगा लाइव, इसको कंप्लीट कर दूंगा फिर एक बार में। Revelio. Lumos. By the way, Cyberness, what do you do? Work, studies? बहुत तेज हो रहे हैं शिंदे जी, रिपोर्ट मारनी होगी, कर दो। What do we have in here then? Narada will be happy about this. A Murmish artifact. ये सही है, पानी में से ही डायरेक्टली झाड़ू निकालो और Your gift from the Mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. I can't wait to study this. यहाँ पे क्या है? Revelio. Black Lake, the Black Lake or Great Lake. The sitting headmaster vainly prefers the Prior. Is an expanse of fresh water south of the castle. The lake's murky depths are home to mer people, grindylows, and other magical aquatic beasts and beings, including the giant squid, a surprisingly friendly cephalopod that with a fondness for toast. Oh, हाँ एक बड़ा squid भी है यहाँ पे। स्लिदरिन हाउस के मेंबर रहोगे तो उनको देखने मिलता है। Revelio. इधर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, फिर एक बार देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास।
क्लास भी अटेंड करना है ना। कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रोफेसर की असाइनमेंट, अरे सर जी आपका फ़ोन भी अनसपोर्टेड हो गया वॉरजोन मोबाइल के लिए। आपको कॉडेम में उसके वजह से रिवॉर्ड मिलेगा कि आप वॉरजोन मोबाइल नहीं खेल सकते। अरे सर आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो। अभी यूबीटी शिवसेना का ऐड आ गया। अच्छा उद्धव बाला साहेब ठाकरे, अरे बाप बढ़िया मैंने थोड़ी ना किया है। बढ़िया आदमी, खराब आदमी, उनका थोड़ी क्रेडिट मुझे लेना है। अभी तो मैं हूँ भी नहीं उधर। बस यही बोलूँगा तुम्हें जो सही लगता है। तो तुम्हारा तो वैसे भी उम्र नहीं हुआ है, बट जब हो जाएगा तब जो सही लगता है उस हिसाब से चूज करना। अरे कौन सा एरिया है? अभी थोड़ा टाइम पहले ही मिल रहा था भाई। गोल चक्कर भी लगा दिया और वो एरिया गायब हो जाता है कि कभी रहता है कभी गायब हो जाता है, ऐसा कुछ है। एक समनर्स कोर्ट करके है। समनर्स कोर्ट में खेल सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में। इसके साथ जाता हूँ, यह ज्यादा बेटर दिखता है झाड़ू के साथ। झाड़ू के मुकाबले फील बेटर आती है इसके साथ उड़ने में, स्पेशली स्कूल के ऊपर से फुल एकदम हैरी पॉटर वाली फील आती है। मैं तो एक ही पार्टी का सपोर्टर हूँ सर। हाँ तो तुम्हारे घर वाले इन्वॉल्व हैं इसके लिए ना। मेरे कोई घर वाले इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके लिए जो अच्छा काम करेंगे, सही काम करेंगे, उस हिसाब से चूज करेंगे। बाकी जैसे मेरे नाना वगैरह थोड़े बहुत इन्वॉल्व थे। इधर ही तो होता है वो। समनर्स कोर्ट कहाँ गया है? मिल क्यों नहीं रहा है? अब ये फ्लाइंग लॉन बना दिया इसको। आई थिंक स्टोरी टू स्टोरी पे भी मैटर करता है, मुझे लग रहा है। इधर ही तो होता था ना, तो इसको अगर हाँ यही होता था, यही जगह था। क्या सही लग रहा है ना ऐसे? अगर एंट्री लो क्लास में, अभी क्लास में एंट्री लेना, बैग में रख लो।
गाइस जो भी देख रहे हो फटाफट से लाइक कर देना. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. इतनी बड़ी बड़ी आंखें. ये निफलर है, निफलर. Excellent work today. Class dismissed. Ugh. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. चलो मैडम से बात I take it you're ready to learn your new spell. Yes, I'm ready to learn my new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only... The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. ठीक है. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Bombarda. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead. Try it on the pumpkins. Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. क्या बात कर रहे हो? Excellent. You have it well in hand. सब छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा. Bombarda! धन्यवाद मैडम. चलो अभी बात करते हैं. Professor, Yes. What is... I was wondering what inspired your interest in magical beasts. Are you considering some sort of profession in the field? Maybe. I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. Teach. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my Yo, 6th hello, and 7th Nikhil. Welcome to the years. stream. कैसे हो? I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered India if में it was alchemy eggs possible मिलता है. that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. ढूंढना पड़ेगा गाइस. ऑकमी तोड़ फोड़ करवा रही. इसमें तो सर एक्सपर्ट है. यस. What type of beast is an alchemy? It is a spectacular beast. A feathered, winged serpent-like creature that can grow or shrink to fit a particular space. Its eggs are made of pure silver, hence the desire to trade in them. अंडे चांदी के होते हैं. Seems quite a challenge finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs.
What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to Nagmani bol understand rahi hai. all that I could about beasts and ensure that Nagmani wizard to kind learn to benefit वो properly from डायमंड them. जैसा Now, जेमस्टोन जैसा होगा ना. I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve मणि your और life, धातु में फर्क and है ना. perhaps one day even save it. I shall remember that, Professor. Thank you. आई थिंक क्वेस्ट टू क्वेस्ट पे चेंज होता है. यहाँ पे ही होता है वो समनर्स कोर्ट जो होता है, जहाँ पे वो बॉल को एक्यो करके खींचना रहता है, वो इधर ही सेटअप हुआ रहता है ना. अभी मिल नहीं रहा है. Revelio. अभी खुल नहीं रहा है. अच्छा, लेफ्ट साइड वाले दरवाजे से खुलेगा नहीं. अच्छा, ये मैडम भी बात करना चाहती है. मैडम कोगावा. पूछ के देखते हैं क्या बोलना चाहती है. हैग्रिड की बाइक कोई मॉड कर दे बस. इधर है. अच्छा, मैडम इधर है. लेवल 2 का लॉक लगाया हुआ है मैम ने. Professor, I wondered if I could ask how you came to Hogwarts. I suppose that is not an unexpected question. After I told you about my time in Mahutokoro, it was a simple matter of fate, really. After my experience with the Toyohashi Tengu, I was determined to find work that would fulfill me. I accepted a position with the Japanese Ministry of Magic. I cannot tell you the specifics of my work. A few years into my post, I had the honor of working with Professor Weasley, at the time a curse breaker for the British Ministry. Professor Weasley was a curse breaker for the Ministry. She was. But I would advise you not to inquire upon it. She is quite clear that her focus is now Hogwarts. कर्स ब्रेकर है तो फिर Coordinated, shall we say, सेबेस्टियन की बहन को हेल्प defensive क्यों नहीं efforts on कर a रही है? particular matter, and we're talking one evening about the rigors of our respective positions. She mentioned plans to return to Britain and Hogwarts specifically. I noted I could appreciate her decision. Her description of the school was so enchanting that when she wrote to me a few years later about the open position of flying professor, I was intrigued. फ्लाइंग प्रोफेसर. इधर गेमिंग प्रोफेसर है. I suppose I can understand wanting to move on from all that you went through with the Tengu. But that is not at all what happened. I was not moving on. What happened will always be a part of me. I learned from it. My reason for coming to Hogwarts was to expand my horizons. Then you enjoy being a flying instructor, even after all that happened? I do. And not despite all that happened, but because of it. You would do well to let lessons be just that, lessons. Learn from your errors, in judgment or otherwise. I am proud to impart such knowledge upon students, no matter where in the globe they may reside. शायद बर्फ पड़ रहा है इसके लिए शायद नहीं होगा यहाँ पे. ऐसा कुछ होगा सीन. बॉल वाला यही रहता था. हैग्रिड की बाइक को क्या डंकी मार के आई है. मैं बीच में देखा डंकी. राजकुमार ईरानी की वजह से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था मुझे, बट ठीक ठाक है. उतना बढ़िया भी नहीं है लेकिन उतना ख़राब भी नहीं है. देख सकते हैं. बट
बहुत ऐसा कोइंसिडेंस वाली बात बहुत हो रही थी कि हर जगह पे कोइंसिडेंस। वो लास्ट वाला वो बहुत सही दिखाया बस, कि इसको वापस इंडिया जब पहुंचाना है। एनीवे हाँ, अभी नेक्स्ट इधर उधर घूमने से अच्छा किधर गया क्वेस्ट? शैडो हाँ ये वाला। अच्छा टैलेंट टैलेंट है, टैलेंट मैक्सिमा पोशन। स्वप्निल वेलकम टू द स्ट्रीम। कैप्टन अमेरिका ब्रांड न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर देख लिया? नहीं अभी तक नहीं देखा मैंने। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड स्वप्निल, तुम कैसे हो? तुमने देख लिया? लेवल 22। अच्छा ये तो सीखना पड़ेगा तभी जाके होगा। डिसेंडो स्लैम, हाँ ये तो चाहिए, ये तो चाहिए भैया, ये तो चाहिए। GM4 पहुंच गया। ओके बाय द वे आई एम फाइन सर। क्या बात है। GM4 फिर तो ज्यादा कुछ बाकी नहीं है। क्वेस्ट में अभी भी 10 बाकी है, इसमें अभी भी 27 बाकी है और एक असाइनमेंट अभी तक आया नहीं। असाइनमेंट कोई आउल में एक बार देख लेता हूँ। आउल पोस्ट किसी ने चिट्ठी विट्ठी भेजी है क्या? सारी चिट्ठियां तो ओपन है। मीट पॉपी स्वीटिंग, ये है क्या चीज? ये एक ही है मेरे पास, मैं उसको यूज कर लूंगा तो फिर पंगा हो जाएगा। फिर वो किस काम का क्या चीज है मेरे को वो याद नहीं आ रहा है। Past the high wing! इसका स्पीड ज्यादा है, ब्रूम से ज्यादा है। मस्त म्यूजिक भी चल रहा है और ऐसा उड़ उड़ के जाने का बहुत सही फील आता है। बैकग्राउंड में हॉगवर्ट्स भी है। अच्छा नीचे थोड़े एनिमीज का प्रेजेंस आ रहा था इसलिए म्यूजिक ज्यादा नहीं हो रहा था। क्या सही लग रहा है ना देखने के लिए। म्यूजिक भी मस्त बज रहा है। हाँ देख लिया, उसमें रेड एल्फ भी है, स्पाई जैसा लगा ट्रेलर। ओके रेड एल्फ तो पहले ही रिवील हो चुका था, हैरिसन फोर्ड का कैरेक्टर थंडरबोल्ट रॉस। एक्चुअल जो थंडरबोल्ट रॉस था उसके तो डेथ हो चुका है। नीचे उतरते ही म्यूजिक बंद। चलो वेट ही कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। Poppy sweeting. High Wing's fine. I'm keeping an eye on her.
She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Okay. Spotify का ऐड ना चल जाए म्यूजिक के बीच में. मैंने आज तक Spotify यूज ही नहीं किया है. एक बार भी Spotify वगैरह यूज ही नहीं किया. Spotify जियो सावन फिर भी मैंने अपने टीवी पे चालू किया था क्योंकि वो जियो के इसमें आता है. सावन पहले जब आया था तब तो यूज नहीं किया था. मेरा म्यूजिक प्लेयर हमेशा से अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो प्राइम म्यूजिक ही रहा है, नहीं तो यूट्यूब रहा है. और अगर ऑफलाइन में कुछ म्यूजिक रहेगा तो उसमें प्लेलिस्ट बना के वो वैसा सुनता था. पहले तो यही चलता था. विंडोज़ मीडिया प्लेयर में म्यूज़िक चलता रहता था और विजुअल्स में अलग अलग वो आता रहता था. मज़ा आता था वो देखने को भी. चालू गाना वाना चालू करके मस्त पढ़ाई वगैरह भी करता रहता था. वैसे हल्क ज़्यादा पावरफुल है या रेड हल्क अकॉर्डिंग टू मार्वल कॉमिक्स? हल्क ही है पावरफुल. रेड हल्क टेरिफाइंग है बट हल्क के बहुत ऐसे भी हैं कि मतलब वो हल्क का सिनेरियो ऐसा है कि जितना वो ज़्यादा गुस्सा वाला हो जाएगा, गुस्सा जितना ज़्यादा आएगा उतना उसका पावर एम्पलीफाई होते जाएगा, मैग्नीफाई होते जाएगा. वैसा है सिनेरियो. तो गुस्सा होते 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 उसका पावर की कोई लिमिट एग्जैक्टली है नहीं हल्क की. और एक मैंने पढ़ा था कि हल्क का एक आइडेंटिटी है. जैसे एक हल्क हो गया, एक प्रोफेसर हल्क हो गया जहाँ पे ब्रूस बैनर और इसका मैश हो जाता है. हल्क का बॉडी और ब्रूस बैनर का दिमाग. और एक होता है क्ल कैसे आया? क्ल इज रिवर्स ऑफ हल्क. मतलब हल्क को उल्टा अगर उसका नाम लिखोगे तो हल्क HULK है ना, तो क्ल मतलब KLUH उल्टा है. तो क्ल और भी ज़्यादा ताकतवर है. उसका काला स्किन या समथिंग कुछ है. सर्च करोगे तो मिलेगा. क्ल करके सर्च करना गूगल पे तो मिलेगा. तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. एंड वो भी बोला कि मैं भी मतलब बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे ब्रूस बैनर के अंदर. ये एक्सपेरिमेंट ने उसको और भी अच्छे से उजागर किया. तो ऐसा नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट की वजह से पैदा हुए, वो सब लेके भी बता रहे थे पूरा. वो उजागर करने में ये एक्सपेरिमेंट ने हेल्प किया था. तो क्लब भी बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, हल्क भी बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था एंड ऑल. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? मुंह में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर बेसिकली. चलो कहाँ जाना है? अच्छा हाँ चलो मैडम. पॉपी स्वीटिंग. वो गैनन. Tread carefully. वो गैनन के तरंग देख के ही बचपन. अच्छा वो गानों के तरंग देख के ही बचपन बिताया है. नाइस. गानों के तरंग वो स्क्रीन सेवर तो और भी खतरनाक होते थे. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them.
If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. क्या बात है? He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. But उसको तो पता है कि हम students हैं. वो बोला entire castle to roam around, but you choose to roam around here. क्या चीज़ है भाई ये? That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Oh, पानी में कुछ है. This पानी में कोई is enchantment. odd. Revelio. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. पानी में जाऊँ क्या? Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. अभी काफी टाइम से कोई ढंग के कपड़े नहीं मिले. हाई लेवल वाले. ये क्या है? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. सेंटोर तो cool लगते हैं. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Merlin only knows. तो Merlin को ही भगवान बना दिया पूरा इन्होंने में. चलो चलो. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. My mother used to always say, a clear head makes way for a clear path. I don't know what your path is, since your head's never seen it. ये भी तो हेल्प कर सकती है ना. मुझे ही सब करना है क्या? I've heard centaurs quieter than you. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out.
वैसे मेरे डोलना 3.0 सॉन्ग तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है सुनने में. दिस सॉन्ग कुड बी वन ऑफ द मास्टरपीसेस ऑफ सोनू निगम, क्योंकि श्रेया घोषाल मैम के उस गाने को नेगेटिव वे में गाना विद आउटस्टैंडिंग टोन एंड रेंज सही में बहुत बड़ी बात है. सोनू निगम कौन सा भी गाना गाए बहुत ही बढ़िया गाते हैं. सिमिलरली श्रेया घोषाल भी, दोनों को ही काफ़ी सालों से ही फॉलो करते हुए आ रहा हूँ. सोनू निगम श्रेया घोषाल को उनके एकदम पहले के डेज से जानते हैं. श्रेया जब छोटी बच्ची थी तब मेरे से तो बड़ी ही है, बट जब वो चाइल्ड सारेगामा वगैरह होता, सारेगामा होता था, सारेगामा तो बाद में आया, तो उसमें श्रेया घोषाल कुछ सेकंड आई थी, एक बार जीती थी. मम्मी ज़्यादा फॉलो की थी, मम्मी को अच्छे से याद है कब जीती थी कब हारी थी, वो सब सेकंड आई थी वो सब में. बाकी सोनू निगम तो मैं वही सारेगामा में होस्ट करते हुए बहुत पहले से देखता था. फिर गाना तो ज़बरदस्ती गाते हैं. चलो अभी टेंट के अंदर घुसते हैं. येलो सर, येलो कज़वा, वेलकम टू द स्ट्रीम. कॉर्ड खेले? कॉर्ड मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल? हाँ खेला, वो तो खेला. क्राइम ऐप भी खेला मैंने. What in Merlin's name? क्या बात कर रहे हो? टेंट के अंदर ही इंडोर गेम्स चल रहे हैं. जैसे हम मगलू लोग डॉग फाइटिंग वगैरह करवाते हैं. It's a dragon fighting room. This is Hauntel Hall. यहाँ पे ये लोग ड्रैगन फाइटिंग करवाते हैं. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. मेरे को ऐसे फर्क पड़ता है. One foot in front of the next and quiet as can be. Then I walked it to a sinking straight at bargain with Totalis. क्या बोल रहे थे भाई साहब आप? इस तरफ कुछ है? Ravenclaw. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join? They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every... It's Totalis. अरे वाह सर, आप तो बढ़िया आदमी हैं. फिर से ऐड आ गया. मेरे हाथ में है ही नहीं ऐड का कुछ. क्या है ये? एप्पल? मुझे लगा मांस के टुकड़े हैं क्या. बड़ी लंबी फाइट चल रही है. स्टाइलिश इनफॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म. अब इनको छोड़ेंगे. Did you hear those weapons? Ravenclaw and poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? ड्रैगन को काबू में कर रहा है. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though.
Not without going down like that. Let's Hello, even Nora. out, shall we? अरे वाह सर, ओके। आई थिंक किशोर कुमार और लता मंगेशकर सबसे बेस्ट जोड़ी बाद आए थे। लता उदित नारायण और अलका याग्निक सबसे बेस्ट जोड़ी, फिर आए सोनू निगम और श्रेया घोषाल सबसे बेस्ट जोड़ी। मैं तो बोलता हूँ जोड़ी वोड़ी बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे सिंगर्स बहुत सारे अवेलेबल है, सबको एंजॉय करो हर एक सिचुएशन के हिसाब से। Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. So we can build it. Hello, Hamura. कभी भी किसी का भी जोड़ी वोड़ी बन जाता है, गाने का अच्छा गाते हैं, एंजॉय करो गाने को rather than comparisons करना। फिर क्योंकि लोग आ जाएंगे, अरे नहीं इन दोनों का जोड़ी नहीं, उन दोनों का जोड़ी और बेटर है। Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Quiet. Too quiet. इतने ही थे। अच्छा, You're the one we're looking for, ain't you, poor friend? Time to get one. Stop right there! You like to talk to dragons, do you? We don't have time. We need to free her now before more show up. Rebellion. Round 2, okay. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. जला देगा। अच्छा खा रहा है क्या?
सर जी आपने रोग मूवी देखा है? रोग ध्यान में तो नहीं आ रहा. I don't think so देखा है मैंने. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. बाहर से लगेगो छोटू सा टेंट में छेद है बस. What do you think? Life of Pi could be an Oscar-winning movie or not? Life of Pi? ये पुराने वाला Life of Pi की बात कर रहे हो क्या? ठीक है, मुझे मतलब एकदम ऑस्कर विनिंग मूवी वगैरह ऐसा कुछ लगा नहीं, बट अच्छी स्टोरी थी उसकी. Since the dragon we freed flew off, थोड़ा हाइप does ज्यादा that था, mean we get to keep the egg? इसकी वजह से I'd लोगों को much पता rather था. we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. The Defender of Dragons. Revelio. ये हो गया ना. It's time you learned the transformation spell. हाँ. After you've completed the required tasks, ये बहुत which I'm सही है. certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. अच्छा, एग्जाम भी देना है क्या आउल का? A Hebridean black dragon egg taken from the poacher's fighting ring. एक काम कर दो, सबसे पहले तो इनको बेच दूं. मैं ये यूज कर रहा हूँ. वेस्ट में प्रोफेसर वीजली का असाइनमेंट, शैडो ऑफ द स्टडी. हॉगवर्ट्स मैप में ये कहाँ मिलेंगे प्रोफेसर जी? साउथ विंग में मिलेंगे. तुम लोग को अपडेटेड रूम ऑफ रिक्वायरमेंट भी दिखा देता हूँ. अभी तो ब्रीडिंग भी चालू हो गया. Clever. How offensive. Next. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone.
I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd brought me enough moons. With that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. However, we don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh. If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora known to wizard kind. At least known to me. ठीक है. Keep looking for those moons, You'll save my sanity and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. ठीक है. धन्यवाद. 9 मैंने रिटर्न करवा दिया. 13 और चाहिए इनको. अरे हाँ, ये वाला तुम लोगों ने देखा है क्या? नहीं देखा होगा, मतलब निखिल ने देखा होगा, बट बाकी लोगों ने नहीं देखा होगा. ये फ्रॉग है ना, फ्रॉग को एंटर कर सकते हैं और इसका एक दरवाज़ा, हाँ ये सामने है. ये जो दरवाज़ा है ना, ये यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. पूरा अंधेरा है, तो ये एक अलग से रूम है. Revelio. Lumos. तो ब्लू में जो दिख रहा है वहां से हम लोग वो एंटर हुए और सीधा यहाँ से निकले. इसने डकार मार के हमें बाहर निकाला, तो हम यहाँ से नीचे कूद सकते हैं. ये वही जगह होगी. ये सब ऐसे छोटे छोटे से चीजें हैं ना जो कि बहुत फैसिनेटिंग बनाती है, स्पेशली हैरी पॉटर फैंस वगैरह के लिए, जो कि हमेशा से चाहते थे कि ऐसे ही कुछ ना कुछ हमें देखने को मिले. अभी लेवल 2 वाले ओपन कर सकते हैं. ओह, इधर भी एक है. इधर लेवल 1. अच्छा, Alohomora. Alohomora. ये सॉल्व हॉगवर्ट्स सीक्रेट्स एक्सप्लोरेशन चैलेंजेस करने से रॉन वीजली का फैमिली बॉलरूम सूट मिलता है. अच्छा, Revelio. ये आउट ऑफ ऑर्डर का कुछ सीन है शायद. Fine now, then, guys. Revelio. अच्छा, और यहाँ पे तितली है. तितली को बुलाता हूँ यहाँ पे. Lumos. मायूस मीना यहाँ रोती थी हमेशा. अरे यही बाथरूम से तो शायद चेंबर ऑफ सीक्रेट्स जाते थे. नहीं, ये वाला नहीं,
वो स्लिदरिन का बाथरूम होता था। ये स्लिदरिन का बाथरूम है क्या? नहीं, ये वाला स्लिदरिन का बाथरूम नहीं है। स्लिदरिन के बाथरूम My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet to the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Okay. ये नॉर्मल बाथरूम है। स्लिदरिन के बाथरूम डंजन में होते हैं। तो स्लिदरिन का जो डंजन होता है वहाँ पे ही कहीं पे बाथरूम है, वहाँ से जाते थे चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के लिए। Revelio. अभी पहले रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में चलता हूँ। मायूस मीना इस बार देखूंगा तो पूरा हिंदी में देखूंगा मैंने आज तक पूरा हिंदी में तो नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा देखा था। मजा आता था। ग्रैपॉन का हॉर्न चाहिए, फीनिक्स फेदर चाहिए, जो मेरे पास नहीं है वही है, बाकी है फीनिक्स फेदर। एक ही ये है जो कि अपग्रेडेड है फुल्ली, बट अभी इसका खत्म हो चुका है काम। ट्रेड्स में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड डैमेज, magic throw, incendio, thanks 3 undiscovered traits। अच्छा ये undiscovered traits हैं, चलो कोई ना। ये वाइवेरियम मेरे 3 हो गए भी वाइवेरियम। क्वेस्ट्स में चेंज कर दो, मम्स द बर्ड। ये क्या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? वेलकम टू द स्ट्रीम जगन्नाथ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ये थोड़ा सा इन्होंने इसमें मुझे लगता है गड़बड़ कर दी है, क्योंकि हाइविंग मेरे साथ भी रहता है जब मुझे माउंट की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे भी आऊँ तो यहाँ पे भी मिलता है। अरे हिपोग्रिफ का भी बच्चा। अरे ये नहीं, इसको मैंने बॉन्ड ही मार दिया। अरे भाग गया, उसको सिर्फ ब्रश करना था। आजा 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 आजा। एक्सीडेंटल हो गया। खा लो भैया, फीडिंग वीडिंग कर लो।
गलती से प्रेस हो जाता है। जगह चाहिए जगह। मेरे पास थेस्ट्रल्स बहुत सारे हैं। थेस्ट्रल चलो इसको मूव कर देते हैं। Professor Howard will never believe this. ऐड क्यों नहीं हो रहा? बीस्ट केयर, इसका खाना बाकी है, इसका भी खाना बाकी है, इसका भी खाना बाकी है। हो चुका है। हाई विंग से सिर्फ कलेक्ट करना है मुझे, और इनको गेंद दे देता हूँ खेलने के लिए। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे। प्रॉपर बुक एडेप्टेशन करी गेम पे विदाउट मिसिंग एनी एस्पेक्ट्स। हाँ, जितना मैंने सुना है बुक के हिसाब से इन्होंने फॉलो किया है। एस्थेटिक्स भी काफ़ी कुछ मूवी से भी इंस्पायर्ड होकर उन्होंने बनाया है, जितना सेम रख सकते थे। बस 2 बुक्स ही पढ़ी है मैंने, गॉबलेट ऑफ फायर एंड चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, लाइब्रेरी से स्कूल टाइम पे। ओके ओके। मैंने तो इनिशियली बुक्स तो नहीं पढ़े थे, फिर मैंने प्रिजनर ऑफ एस्काबान मैंने जुगाड़ करके ख़रीदा था, वो जो होता था फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी वगैरह, तो वो पढ़ा था। एंड बाकी जो भी थे मेरे दोस्त लोग जो पढ़ते थे, पूरा मेरे को कहानी बताते थे। तो काइंड ऑफ जब मैं इनिशियली मूवी देखा था ना, तो इतना जब कहानी मैं ऑलरेडी सुन चुका था, तो उस हिसाब से मूवी में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ था। ये खा क्या रहा है? इधर तक आवाज़ आ रही है। चलो मैं अंदर जाता हूँ अभी। इन्होंने कुछ चीज़ें फैंटास्टिक बीस्ट से भी इंस्पायर्ड होके, जैसे नैपसैक वगैरह, वाइवेरियम जो है, फैंटास्टिक बीस्ट में इंस्पिरेशन इसको मिलते हैं। यूनिकॉर्न हमारे पास एक्स्ट्रा तो है नहीं। खाना खा रहे, खाओ खाओ। लो, आई मीन पंक्चुअल, वाओ सो क्यूटी पाई ड्रैगन पपीज। ड्रैगन नहीं है, ड्रैगन अभी ड्रैगन वाला भी करेंगे। जस्ट थोड़ी देर पहले एक ड्रैगन वाला मिशन किया था। उसका हो चुका है। ये दूसरा वाइवेरियम है, कल फिर तीसरा वाइवेरियम भी अनलॉक हुआ था। कौन है?
एकदम आंखें बंद कर करके फुल मजे ले रही है ब्रशिंग का। ब्रीडिंग के लिए ये 2 ही। अच्छा हाँ, हमारे पास यूनिकॉर्न फीमेल नहीं है और ये जायंट पर्पल टोड का भी फीमेल चाहिए। मेल फीमेल कैसे पता चलता है? I'll look after you. यूनिकॉर्न का भी मेल फीमेल का कुछ देखना पड़ेगा। अभी तीसरे वाले में जाएंगे और तीनों के अलग अलग एनवायरनमेंट उन्होंने दिए, वो बहुत सही लगा मुझे। लो यू भी वेलकम टू द स्ट्रीम। Revelio. बच्चे हैं बच्चे। इसको गलती से बॉन्ड चला दिया था इस पे। नर्चर्ड इससे कलेक्ट करना है। अरे कितना छोटा सा है। चलो भाई तुम मत दो कुछ, मैं चलता हूँ यहाँ से। अरे एडोरस पोशन, मैक्सिमम पोशन यही है। गाइस जो भी देख रहे हो फटाफट से लाइक कर देना। चलो डिविनेशन क्लासरूम के बाहर मिलना है। Revelio.
ठीक है, लेवल 2 है तो ज्यादातर जगहों पे तो घुस जाऊंगा मैं। Alohomora. ये तो लेवल 1 है। Revelio. अरे भाई बिल्ली पेट कर लो। RDR2 में बिल्ली पेट नहीं कर सकते बट कुत्तों को पेट कर सकते हैं। बहुत जितने बार कर रहे हैं उतने बार कर सकते हैं। डियर प्रोफेसर शाह, thank you for your recent submission regarding celestial anomalies. It may be a perfect addition to an atlas I'm hoping to publish. I shall be in touch if I decide to include your submission or any of its related research in the publication. Best wishes, MPN Carneros. Alohomora. इधर भी Alohomora. Alohomora पे Alohomora. Tartan West School uniform. Revelio. कोई और सीक्रेट वगैरह छुपाया है? नहीं छुपाया। क्यों नहीं छुपाया? छुपाना चाहिए था। ये कौन सा क्लास है? ये अच्छा ये चार्म्स है क्या? अच्छा ये ताला ऑलरेडी तोड़ चुका है। Alohomora. Alohomora. Revelio. Golden silk robe. Dark Tower cell. It is said that centuries ago, a charms professor kept a troll here on which students could practice particularly challenging spells. Shocking, to be sure, but perhaps unsurprising during a time when Quidditch involved the use of live snidgets. One can only wonder what it may be used for in the future. कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं हो गया? ये भी सही दिख रहा है वैसे। ये सही लग रहा है। इनमें से ढूंढना पड़ेगा। जैसे गोल्डन सिल्क रोब नहीं, ये गोल्डन सिल्क रोब नहीं है। ये कुछ हिस्टोरियंस यूनिफॉर्म। Island Explorer.
ये वाला रखता हूँ। आज गेम खत्म होगा, ये लॉक खोलने का अलग दर्द है सर। इजी है ये तो, कीबोर्ड एंड माउस में ज्यादा इजी है, कंट्रोलर में थोड़ा झमेला है क्योंकि वो कंट्रोलर होल्ड करके रखना पड़ता है, उसको छोड़ नहीं सकते। कीबोर्ड एंड माउस में एकदम इजी है। क्यू करके घुमाते रहो, जो बाहर वाला है उसको क्यू या ई से घुमाते रहो, थोड़ा सा हिलेगा उसको वहां पे स्टॉप कर दो, और अंदर वाला जो है ए या डी से प्रेस करो, जहाँ पे हिलेगा वो अंदर वाला गियर मूवमेंट दिखेगा, वहां पे स्टॉप कर दो। थोड़ा सा एडजस्ट करना है। बस ये है कि रिपीटेड एक ही चीज करनी पड़ती है, Revelio. बार बार एक ही चीज चली जा रही है। तो बहुत सारे लॉक्स ओपन करने पड़ेंगे तब जाके तुम्हारा गेम ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट होगा, मतलब साइड क्वेस्ट वगैरह सब मिला के। यहाँ पे हमेशा एक बिल्ली मिलती है, पता नहीं क्यों। क्या फ्रेम ड्रॉप कर रहा है। आज गेम खत्म, कोशिश कर रहा हूँ आज गेम खत्म करेंगे, उससे थोड़ा जल्दी भी आ गया था। डिविनेशन के लिए तो मुझे एकदम टॉप पे जाना पड़ेगा। So frustrating. अच्छा ये इसकी मॉम है ना? हाँ मैं भूल गया था। I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Easy है but बार-बार खोलना पड़ता है। हाँ वो है। She never listens to me. बार-बार She called you her little gazelle. ताले खोलने पड़ेंगे। Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Animagus. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month. Then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight. Then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu. But Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal?
Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. डार्क स्पेल में क्या-क्या सीखा? डार्क स्पेल मैंने नहीं सीखा, ये वाले में मैंने Now the nickname makes सीखने वाला हूँ। sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love इसी का एक transforming, सेव but Mother is मेंटेन less करके रख रहा हूँ, enthusiastic अलग से about फिर it. बाद में She says that no creature, तीनों spells सीखूंगा, especially one as unforgivable rare as a spells. gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Ominous वाला Thank you for being here during Ominous that वाला rather मतलब awkward conversation. एक देखो यहाँ पे मेरे पास वो साइड क्वेस्ट में आता है, जैसे in the shadow of study. So in the shadow of study में Sebastian wants to meet outside the Slytherin common room to talk to me about Slytherin scriptorium. Meet Sebastian outside the Slytherin common room. इसमें मुझे सीखने मिलेगा क्रूशियो वगैरह. तो एक मैंने ऐसे ट्राई भी किया था, तो क्रूशियो उसमें सीख सकता हूँ. उसमें एक डायलॉग ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि शायद मैं वो क्वेस्ट करने के बावजूद भी क्रूशियो को मैं बोल सकता कि मुझे क्रूशियो नहीं करना है. तो ये वाला मुझे काइंड ऑफ एक क्लीन प्ले थ्रू रखना है. चाहिए तो अगर सेपरेट प्ले थ्रू, मतलब ये मैं अलग से अपने हिसाब से खेलूंगा. सेपरेट प्ले थ्रू में उसको एक्सपीरियंस करने जाऊंगा. Revelio. या फिर यही सेव में अगर मैं साइड क्वेस्ट को कंटिन्यू कर सकता हूँ तो वो उसको आगे कंटिन्यू करूंगा. अरे हाँ, ये हॉल जो है, नहीं ये दूसरा हॉल, मैं वो घड़ी वाला सोच रहा हूँ. कौन सा क्वेस्ट अभी मुझे, हाँ ये वाला, टॉक टू पॉपी. बाहर की दुनिया में क्या? हॉग्समीड में. ये वाला ही सी मैंने क्रूसियो वाला सीखा. हाँ, ऑप्शन आता है. फर्क क्या है? आई मीन अलग अलग करने का मुझे नहीं पता. मैं वही मैंने सुना है कि वो एक, मतलब तुम्हारे पास मौका है नहीं सीखने का और सीख के भी कर सकते हो, तो सेपरेट एक्सपीरियंस में भी मिले. आई डोंट नो, हो सकता है कुछ ज़्यादा फर्क भी ना रहे. I never heard the rumors of your involvement. Revelio. I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Oh, I do hope Mary and her neighbours aren't harmed. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. अभी जैसे RDR2 है. They appear to be goblin silver. RDR2 में I think a collar is precisely what we found at एकदम that अच्छे से poacher camp. खेलोगे तो तुम्हारा वो एक्सपीरियंस अलग रहेगा. Just to use anything like that before. अगर तुमने पूरा एकदम evil रूप वाला खेला, उसका एक्सपीरियंस पूरा अलग रहेगा. High honor और low honor. That attack always did strike me as a little strange.
seemingly coming out of nowhere. और टोटल 4 Surely you एंडिंग्स aren't रहते हैं उसमें. suggesting that the collars somehow control the poor creatures. Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. So, तुम्हारा जो अगर हाई ऑनर में तुमने खेला, मतलब अच्छा एकदम खेला, अच्छा बन के, तो तुम्हारे पास 2 एंडिंग्स रहते हैं. लास्ट मिशन में जाके तुम चूज कर सकते हो, तो उस हिसाब से 2 एंडिंग्स मिलेंगे. और अगर तुमने लो ऑनर मेंटेन किया है, एकदम लो ऑनर चल रहा है तुम्हारा काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पे तुम्हारे पास 2 एंडिंग्स और मिलते हैं. तो उस हिसाब से तुम्हारा गेम का एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क आता है. NPCs अलग वे में रिएक्ट करते हैं, बट RDR2 अलग लेवल का ही है, बहुत ही अलग लेवल का है. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Professor Fig की जगह Fig बोले Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. ठीक है. ये सेरोना का आवाज से डर लगता है. आपने कंप्लीट करा RDR2? हाँ, कंप्लीट कर दिया मैंने, बहुत पहले ही कर दिया था. मैंने हाई ऑनर के साथ कंप्लीट किया है. और ये देखो यहाँ पे ये खाना खा रहा है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है मुझे, कैसे खाना खा रहा है. RDR2 में अगर कोई खाना खाएगा तो वो पूरा एकदम वो प्लेट खाली हो जाता है. तो जितना पोर्शन अभी देखो इसने यहाँ से लिया है मैजिकली, वो उतना भरा पड़ा ही है. बट उधर जाओगे तो वो नैपकिन से पोंछेंगे, फिर खाना खाएंगे, उतना उतना खाने का पोर्शन कम होता जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा. फिर उसको प्लेट को रख देंगे, फिर चले जाएंगे. Oh, I do hope Mary and her neighbors aren't harmed. Immersive लगता है इसके लिए. Excuse me, sir. Are you all right? Just barely, but I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. RDR2 भाई. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet, just stunning gardens. Just the other day, GTA 5 के Daily चलते Prophet ran an article on the scenic RDR2 थोड़ा hedgerows. दब गया Actually, मुझे लगता है. before I go on, I should ask: are you afraid of spiders? Nope. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? मैंने बीच में से बंद कर दिया. अच्छा. मेरा अभी काइंड ऑफ साइबरपंक छूट गया है. साइबरपंक का मैंने मेन गेम मेरा कंप्लीट हो चुका है, बेस गेम. DLC बीच में से छूट गया अभी, जब से कंट्रोलर आया तब से, क्योंकि उसमें कंट्रोलर में थोड़ा सा मुझे जम नहीं रहा था. पहले तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन सा कंट्रोल कहाँ पे कैसे जाएगा करके. अभी तो शायद मैं फिर भी खेल सकता हूँ. मैंने ट्राई नहीं किया काफ़ी दिनों से. अभी ये जैसे हॉगवर्ट्स चल रहा है तो हॉगवर्ट्स खेल रहा हूँ. Why are there so many spiders in Arranshire all of a sudden? I honestly don't know. I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her.
Why is it you can't conquer your fear of spiders? When I was a small child, I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralysed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Ugh. Why didn't you ask the ministry for help? I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout old Spavin himself. But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little hamlet has to fend for itself. साइबरपंक तो फ्लॉप हो गया ना? नहीं साइबरपंक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया अभी तो. साइबरपंक का DLC भी उसको और भी ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है. और DLC विदाउट बेस गेम के तो वैसे भी कोई खेल नहीं सकता. तो उन्होंने अच्छा खासा कमाई कर लिया, कमबैक भी बहुत ज़बरदस्त किया, DLC ने भी बहुत तारीफ लिया है. और साइबरपंक जो इनिशियली लॉन्च हुआ था और अभी के गेम में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है. RDR2 से अगर RDR2 तो तुमने खेल लिया वैसे, बट अगर RDR2 से पहले हो सके तो साइबरपंक खेलना, क्योंकि साइबरपंक की कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे RDR2 थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगता है उस मामले में. बट साइबरपंक पे भी साइड क्वेस्ट बहुत सारे हैं और उसका भी जो स्टोरी है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है. RDR2 है ना, इमर्सिव फील होता है. मतलब तुम्हारे जो भी वर्ल्ड में NPCs है, बाय द वे अर्नब वेलकम टू द स्ट्रीम. वर्ल्ड में जितने भी NPCs वगैरह हैं, हर एक सेपरेट कैरेक्टर वाला फील देता है कभी कभी. और एकदम रियलिस्टिक रिएक्शंस देख के लगता है, जो कि साइबरपंक में वो चीज़ मिसिंग है. वो चीज़ थोड़ी सी मतलब थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगती है, क्योंकि वो RDR2 के बाद में आया था. आई डोंट नो कितना बजट था दोनों गेम्स का. इसका भी तो अच्छा खासा बजट रहेगा और बहुत सालों से डेवलपमेंट में था. बट उन्होंने बहुत चेंजेस किए साइबरपंक ने. ग्लिचेस बग्स तो ऑलमोस्ट ही हट चुके हैं. अभी तो बहुत रेयरली थोड़ा बहुत दिखता है, बहुत रेयरली. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है. Thank you. They'll find Aaron मतलब लिटरली फील होगा वो कैरेक्टर्स को लेके. Just below the train station. 7-8 डिफरेंट टाइप्स के एंडिंग्स भी मिलते हैं. I'm sure you had your reasons, but breaking into Alfred Lawley's home wasn't the brightest idea. सिरोना वो तो आवाज से डर ही लगेगा. मुझे लगा ही था ये LGBT समाज की है. अरे हाँ, मुझे बेचना है ना, इसको बेच सकता हूँ. You're back. Nice to see you again. कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिया, बताया नहीं इसने. इम्प्रूवमेंट बताना चाहिए था. सेल ऑल का कुछ ऑप्शन देना चाहिए, या सिलेक्ट एंड सेल. Thanks for stopping by. Hope to see you again. यहाँ से ना DLC, हाँ RDR2 में फील होता है. DLC डाउनलोडेबल कंटेंट उसका ये है ना, फैंटम लिबर्टी DLC है. High wing, go! हाँ, इधर टोड के मिल सकते हैं मुझे फीमेल टोड चाहिए, बट फीमेल टोड कैसे पहचानूंगा मैं?
Do cooperate, won't you? There. I'm not going to hurt you. Arresto Momentum. Confringo. Bombarda. Defender. Revelio. तो सारे उधर भाग गए. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Defender. सर आपने कितने में परचेज किया हॉगवर्ट्स? मैंने क्रैक लिया क्योंकि अभी पैसे नहीं. मैंने 1200 में लिया. Let's go. Come on, High Wing. Faster, High Wing. थोड़ा सा ही ऊपर जाना है वैसे तो. लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने में मजा आता है. This must be Arrowshire. Let's keep an eye out for spiders. Slow down now. There we go. Bombarda. Potato. Stupid. Confringo. क्या बात कर रहा हूँ? Defender. Expelliarmus. More aggressive than I'd expected. Confringo. Defender. Expelliarmus. Bombarda. Potato. Stupid. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. खत्म. Surely that's the last of them. ये तो मैं इंसेंडियो यूज नहीं किया. इंसेंडियो यूज करता तो फिर तो और भी जल्दी खत्म हो जाता. Due to the plague of spiders, I have decided to temporarily leave my home. Again, this is only a temporary arrangement. I will be back once everything has been cleared up. And I expect my house to be exactly as I left it. No spiders, no vagrants, no arguments. Revelio. यहाँ पे लेजेंडरी डब्बा लग रहा है. हाँ लेजेंडरी है. Unidentified item. Not sure how I'd fare in a little place like this. Hello, Hamora. इतना सस्ता? हाँ अभी रिसेंटली सेल आया था. इसको मैं छोड़ दूंगा तो अपने आप ही हट जाता है कंट्रोलर का. यही पंगा है. एक बार वो ऐसा लॉक हो जाता है तो फिर ओपन हो जाता है इजीली. वो जगह पे थोड़ी देर होल्ड करना पड़ता फिर खुल जाता. कीबोर्ड में ये वाला झमेला ही नहीं है. I have changed my mind. I am moving to the city. I have had enough of country living. I am going to where there's no chance I will ever encounter another spider. Even the wee ones. My cottage is available to any and all who don't mind living under the specter of another spider attack. Take it all. I shan't be coming to these parts ever again.
सस्ता, यस। विंटर में तो और भी सस्ता हो सकता है। विंटर में एपिक गेम्स, अगर एपिक गेम से बाय करोगे, एपिक गेम्स में तो 50-60% डिस्काउंट तो देते ही है। उसके ऊपर से तुम्हें शायद 25-33% या उससे भी ज़्यादा दे दे, क्या पता। पिछली बार 33% दे रहे थे। सपोज कोई गेम है 1000 का, उस पर 50% ऑफ है, उसके ऊपर फर्दर 33% एपिक वाले दे रहे थे। तो वो 1000 का गेम तुम स्टीम पे खरीदोगे 50% ऑफ में 500 पड़ेगा। इसमें तुम्हें 500 के ऊपर 33% ऑफ, मतलब 1/3 समझ लो, 170 के आसपास। सो दैट मीन्स ये 330 वगैरह कुछ पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, 333। और उसके ऊपर से ये जो 333 है, इसके ऊपर और 10% कैशबैक भी मिलेगा। तो 33 रुपये का कैशबैक भी मिल जाएगा उसके साथ साथ। तो नेक्स्ट गेम में ये 33 रुपये और माइनस हो जाएंगे। Alohomora. एक कीबोर्ड से करूँगा। रोरी तो वेलकम टू स्ट्रीम। कीबोर्ड से फाइट करना मज़ा नहीं है। अच्छा चलो ये वाला कीबोर्ड से फाइट करके देखता हूँ। कैसे हो रोरी, तो कैसे चल रहा है सब? My dear one, you asked about what happened in Arranshire, so I tell you all of it. When the spiders came out of the ground, it was like a great rushing tide. Most of us had no time to react, and I and a few others took to a roof without having time to take hold of our wands. We were stranded up there for what seemed like an eternity. Sometimes we could scare them off, sometimes those eyes, lifeless, evil eyes, 8 of them. When they are towering over you, all you see is your own fear multiplied 8 times. That and their fangs, shiny with venom. One by one the spiders picked us off. The victims' screams were awful, pierced my soul like a blade. Hearing my neighbors coming to such a gruesome end, not dissimilar to a dementor's kiss, I would imagine. The silence was a relief. We wished them a quick death, and for ourselves too, if it came to it. Especially then. Finally, a witch flew by low in the air and spotted us stranded. By then, all that was left was me and Dog's body Pete. Anyway, we survived, but sometimes we wish we hadn't. I shall be haunted forever. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Defender. चेंज कैसे करते हैं इसको? स्पेल्स को स्क्रॉल करके? स्क्रॉल से तो नहीं हो रहा है। अच्छा, ड्रैग टू स्लॉट स्पेल। चेंज कैसे करते हैं? नहीं, Revelio. आर से रेवेलियो है। Confringo. मेरे दोस्त ने GTA 5 प्रीमियम वाला फ्री में लिया। उस दिन फ्री में मिल रहा था, उसने मुझे बताया नहीं। फ्री में तो बहुत दिन पहले की बात है, वो तो कोविड वगैरह के टाइम की बात है। Navigator scarf. बढ़िया। आई हैव द सेम हेडसेट दैट यू आर वेयरिंग। हाँ, फाइट के टाइम पता नहीं चलता है 1 2 3 4 में से क्या दबाना है, बट वो तो हो जाएगा, आदत की बात है।
यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़ा करके ही दिख रहा है 1 2 3 4 में से कौन सा दबाना है। Hello, Hamora. मुझे खाली ये पता नहीं चल रहा कि उसको चेंज कैसे करूँ स्पेल के सेट्स को। स्क्रॉल करके कर रहा तो स्क्रॉल करके तो नहीं है। This cellar gate looks to be locked. I'll need a key to enter. Revelio. अच्छा ये ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। Revelio. क्या अंदर? What do we have here? A demiguise. Oh no, this must be Mary. Poor woman. Confringo. Defendo. Incendio. H. I have delivered the spider venom as requested. Prompt payment is now due. The new cluster of spiderlings in my cellar workshop have almost hatched. I can provide more venom soon once, of course, I have been compensated for the last delivery. If Mary was breeding these things in her cellar, that means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. ठीक है। हाँ ये डेफिनेटली कन्वीनियंट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द कंसोल। हर एक का ही अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। Mine now, demiguise. Yes, convenient है। Mine now, demiguise. तो एक काम करता हूँ। अच्छा मैं इधर हूँ ना। डेमिगाइज लेने के लिए वापस से अलग टाइम पे आना पड़ेगा, इससे अच्छा रात को अभी पकड़ लेता है इनको। किधर है डेमिगाइज? ऊपर है क्या? हाँ ऊपर है। रात के टाइम भी अवेलेबल होता है ना इसके लिए। चलो अभी इसको मैंने कैप्चर कर लिया, या वापस से यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। फाइट के टाइम F1 की जगह 1 2 3 4 में से कुछ दब जाता है आज। Revelio. If this is where Mary bred the spiders, they're not here now. म्यूजिक तो डरावना वाला देना शुरू कर दिया इन्होंने। यहाँ पे कुछ है? हाँ यहाँ पे कुछ बॉक्स वॉक्स है। Well, this isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. इंसानों की हड्डियाँ। A ladder. Not sure I want to know where this leads. I'd best be ready for whatever I may find down there. मजा आया फिर। पास कोई पोशन है? ये पोशन थंडर ब्लू पोशन डेफिनेटली कलेक्ट करके रखना, बहुत तगड़ा है। मतलब कोई भी सिचुएशन से तुम्हें find and destroy all of these before the situation gets even worse. That's one exact point. Get the rest. Can't let you hold on to any of the
करने की जरूरत ही नहीं। Shame you're so foul. Revelio. इनको मेरे को अलग से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये थंडर ब्रू ही इतना पावरफुल है। घिरे रहोगे एनिमीज से, वो क्लाउड्स बन जाते हैं और वो खुद ही मार देते हैं। I hate to think that they see me, but I don't see them. Revelio. रेवेल्यू करते रहोगे तो दिखता भी है कहाँ पे है ये। Revelio. Oh, finished. But I need to destroy all of the exiles. Revelio. Incendio. फाइट के टाइम थंडर वाला खरीदने में सर पैसे खत्म हो जाते हैं। अरे पैसे दिखाए तो थे कल, पैसे खरीदने की जरूरत नहीं है। हॉपिंग पॉट ले लो, हॉपिंग पॉट 3000 का पड़ेगा, वो ले लेना और वो 3 सेटअप कर दो। आर्ट में डिस्ट्रॉय कर सकते। अरे म्यूजिक बहुत जबरदस्ती है भाई, सही म्यूजिक दिया है। वो म्यूजिक बहुत सही दिया था, कंटिन्यू करना चाहिए था। प्रॉपर हॉरर वाली थोड़ी फीलिंग आ रही थी। Revelio. नहीं, इधर कुछ भी नहीं है। Revelio. Incendio. इनका तो आग ही सबसे बड़ा दुश्मन है। बाकी देखो सब कुछ ही काम का है। ये थंडर ब्रू पोशन ये तो है ही, बट उसके साथ साथ फोकस पोशन से स्पेल का कूलडाउन कम हो जाता है। मैक्सिमम पोशन में तुम्हें ज़्यादा डैमेज मिलेगा, आई थिंक सो। हाँ, ज़्यादा डैमेज मिलेगा। एडवेरस में डिफेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी ये वेनमस टेंटाकुला, चाइनीज कैबेज, मैंड्रेक तो तुम्हें डिसोरिएंट करने के लिए रहता है। डैमेज थोड़ा बहुत अभी ज़्यादा दे सकता है। बाकी चाइनीज कैबेज भी बहुत खतरनाक है, वेनमस टेंटाकुला भी बहुत खतरनाक है, स्पेशली अगर तुमने उसको अपग्रेड कर दिया तो। इस तरफ जाना है हमें। नहीं, यहाँ पे तो ये खत्म हो जाता है।
आगे फिर यहाँ पे ये यहाँ से तो ये सामान मैंने ले लिया था। फिर ऊपर चढ़ने का कोई ऑप्शन? हाँ यहाँ से दिख रहा है शायद। Incendio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Revelio! The last of the spider sacks. I finally found the perfect place to breed my spider colony, and it was quite literally under my nose the whole time. My cellar. Why didn't I think of this before? Why hasn't anyone, for that matter? My spiders are growing big and strong, and the silk they produce will make me a fortune. I will have wealth at last. No more scrimping on frogs when I'm in town. It will be marvelous. नेक्स्ट गेम कौन सा? माफिया डेफिनेटिव एडिशन। रिसेंटली प्राइम वाले फ्री में दे रहे हैं। फ्री में तो नहीं एग्जैक्टली, बट प्राइम मेंबर्स को मिल रहा है। क्या बात है सर? एड्स आ रहे हैं, एक कंट्रोलर गिफ्ट कर दो। क्या बात कर रहे हो? I suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. ये इतना टाइम के बाद इसको समझ में आ रहा है। I hope that's the last spider. Incendio! Revelio! Revelio! ज्यादा कोई खतरनाक आया नहीं। अभी आएगा क्या? Oh wait, that's the last one. She's angry. इसके लिए तो थंडर ब्रू चाहिए ही चाहिए। I'll be having nightmares for the rest of my life after that. चलो खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा ना ऐसा म्यूजिक अभी भी ऐसा डरावना टाइप देके रखा है कि अभी भी और 2-4 आएंगे करके। देखा, थंडर ब्रू की भी जरूरत नहीं पड़ी।
मैंड्रेक से उसको स्टन कर दिया। चाइनीज चॉम्पिंग कैबेज 2 यूज कर लिए। अभी भी हैं यहाँ पे। अच्छा ये छोटे छोटे वाले हो गए। हाँ ये वाले। ये ऐसा हॉन्टिंग साउंड इफेक्ट वाले बहुत सही लगते हैं सुनने को। गेम में इंट्रोड्यूस किया तो और भी सही लगता है। यूजुअली मैं ब्रेव से देखता हूँ तो एड्स नहीं आते। अच्छा अच्छा मैंने प्रीमियम ले लिया, बहुत दिमाग खराब हो गया था। मैं भी ब्रेव यूज़ करता था बट ब्रेव में फिर आने लग गया कि ये यूट्यूब से आने लग गया कि हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यू आर यूजिंग एड ब्लॉकर्स। हर दूसरे वीडियो पे यही हो रहा था। फिर तो ब्रेव छोड़ के फिर वापस से क्रोम पे ही आ गया मैं। फिर क्रोम पे इतने एड्स आने लग गए, मैं सोचा देख लूँगा, मैं एड्स सहन कर लूँगा। फिर देखा तो इतने एड्स आने लग गए, तो साल भर का क्या है। अच्छा साल भर वाला ही ले लेता हूँ। मेरे को तो नहीं आता एड्स, आई मीन ऐसा नोटिफिकेशन। मुझे तो आता था पहले, बहुत आ रहा था। तभी बहुत एड ब्लॉकर का क्रैकडाउन चल रहा था। Hogsmeade, here I come. क्या दिक्कत क्या है भाई? Aloha Mora. एड्स आजकल बहुत बढ़ गया। इंडिया में तो लोगों को पैसे मिलते ही नहीं उस हिसाब से। Revelio. मुश्किल से ही कुछ रुपए मिलता है। ऊपर से एड ब्लॉकर्स और ये, और जो प्रीमियम भी यूज करते हैं उनका भी ज्यादा पैसा नहीं मिलता। गेमिंग में भी पैसे कम होंगे वैसे। चलो इसको खुशखबरी दे देता हूँ। Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit, and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary, what untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do.
I am sorry about your friend. But you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the amulet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. That's the spirit. I wish you the best of luck. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. To dearly departed Mary. सर कोई भी मोबाइल में गेम डाउनलोड करूँ तो बिना एड्स देखे भी नहीं सकता, मतलब मोबाइल में गेम डाउनलोड करो तो बिना एड्स देखे भी नहीं खेल सकता। ये मर्लिन्स बियर्ड का क्या मतलब है? मर्लिन के बारे में पता है? मर्लिन के बारे में नहीं पता रहेगा तो इतना तुम्हें उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता होगा। तो इंग्लैंड में उधर एक स्टोरी, एक कहानी है, किंग आर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल करके। बहुत बचपन में मैं स्कूल में जीता था तो मुझे बुक मिला था उसका प्राइज में, तो वो स्टोरी मैंने पढ़ी थी, किंग आर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। एक्सकैलिबर करके एक स्वॉर्ड के बारे में सुना होगा। तो किंग आर्थर का सीन ऐसा है कि उसका कुछ तो था कि बचपन में मर सकता है या समथिंग, उसको अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ेगा, तो माँ बाप उसको दूर भेज देते हैं। और इसके दो बेटियां रहती है, एक कुछ तो मॉर्गना करके उसका नाम रहता है और दूसरी वाली कुछ रहती है। मॉर्गना बहुत ही इविल सी विच टाइप रहती है, उसको मैजिक सीखना रहता है बट वो इविल चीज़ों के लिए यूज़ करती है। तो वो जो राजा का जो एडवाइज़र रहता है, मैजिकल एडवाइज़र, वो रहता है मर्लिन, जो कि लेजेंडरी मैजिशियन है एंड बहुत पावरफुल मैजिशियन है। तो राजा जब मर जाता है तो फिर बाद में डिसाइड होता है कि एक पत्थर रहेगा, पत्थर के अंदर एक स्वॉर्ड डाल देंगे करके। तो वो जो स्वॉर्ड निकाल सकता है वो रहेगा उसका असली एयर या सक्सेसर। तो आर्थर तभी स्टेबल बॉय या कुछ तो रहता है, गरीब से घर में उसको दिया रहता है, उसका आइडेंटिटी छुपा दिया रहता है। मुझे एग्जैक्टली उसका ओरिजिन याद नहीं आ रहा। आई थिंक वो कहीं कोई अटैक से बचने के लिए किया था या राजा ने जानबूझ के किया था, तो वो याद नहीं आ रहा है। तो आर्थर वहाँ से वो निकालता तो वो किंग आर्थर बन जाता है। तो वो संभालते संभालते ये जो मर्लिन रहता है, मर्लिन मॉर्गना को सिखाता रहता है, बट मॉर्गना फाइनली मर्लिन को ही बहुत टॉर्चर कर करके उसको मार देती है। बट मर्लिन बहुत हाई लेवल का मैजिशियन था, तो आर्थर को भी उसने बहुत हेल्प किया था, एक्सकैलिबर गैदर करने में हेल्प किया था। एक ऐसा आर्मर हेल्प किया था उसको गैदर करने के लिए जिससे कि आर्थर को कभी डैमेज ही नहीं होगा, एक ब्लड मतलब ब्लड का एक ड्रॉप भी नहीं गिरेगा उसके बॉडी से, इस लेवल का है। तो ये सब बहुत किस्से कारनामे मर्लिन के हैं। तो यहाँ पे तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि मर्लिन की जगह ओ गॉड, यहाँ पे ओ मर्लिन, मर्लिन्स बियर्ड, तो हे भगवान वैसा टाइप का एक एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर रहा है। ओ गॉड उस जगह पे मर्लिन्स बियर्ड ऐसा है। तो ऑलमोस्ट मर्लिन को भगवान के समान इक्वेट कर रहे हैं। अभी इसमें वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि मर्लिन शायद एक मिस्ट्री हो सकता है, मिथ भी हो सकता है, रियल फिगर शायद ना हो, मिथिकल फिगर होगा। बट इसमें मर्लिन ट्रायल्स भी हैं। फिर कुछ कुछ जगह पे बोल रहे हैं कि जो हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स थे उसमें भी मतलब मर्लिन भी वन ऑफ द फ्रेंड्स था उनका, बहुत अच्छे रिश्ते थे। मर्लिन काफ़ी सालों तक जिया था। कौन मर्लिन रियल है? थैंक यू सर। नहीं रियल तो नहीं है, अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं मिला है रियल होने का। Talk about you taking down that troll in the village circle. The
वो कहानियाँ होती है ना वैसे टाइप की, ये भी एक कहानी है। ये इंग्लैंड साइड की कहानी है। You're back. Nice to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see you again. एक बार रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाता हूँ। अगर मौका मिले तो पढ़ना, इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं भी बहुत टाइम हो चुका है पढ़े। बचपन में पढ़ता था रेगुलरली, तभी तो इतने गेम्स वगैरह पॉसिबल नहीं होते थे। Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. पोशंस ब्रू करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही मिल जाता है। विगन वर्ल्ड तो ऐसे ही मिल जाता है। देखो फोकस पोशन मिल गया, जगह नहीं है मेरे पास। और वाइवेरियम में अलग से तुम्हें इंग्रेडिएंट्स मिलते जाएंगे। ये जो वाइवेरियम है, 3 वाइवेरियम हो गए अभी तो, अलग से इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तुम्हें। Kestrel hair. ये खेलना चालू कर देते हैं, बॉल मिल जाता है, आपस में खेलना चालू। वेदर वेदर चाहिए था मुझे, चलो हो गया।
गाइस जो भी देख रहे हो फटाफट से लाइक भी कर देना। हाँ इनका ब्रीडिंग यहाँ पे कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, एक ही ब्रीडिंग आई थिंक इनफ है। ये बॉल इसको मिला कहाँ से? ये सिर्फ यूनिकॉर्न के लिए है। चलो नेक्स्ट क्वेस्ट की तरफ जाते हैं इसके बाद। अच्छा ये फीडर के सामने है, अंधेरे में दिखता भी नहीं है। चलो पोशंस का देख लेता हूँ। पोशंस में कौन से फोकस पोशन, मैक्सिमम पोशन। हेलो मेजर, वेलकम टू स्ट्रीम। कैसे हो? बैटमैन आर्कम नाइट खत्म कर दिया मैंने मेन स्टोरी। ओके उसके पहले के 2 गेम्स खेले कि नहीं, या डायरेक्ट आर्कम नाइट ही कंप्लीट कर दिया? आर्कम असाइलम और आर्कम सिटी। डायरेक्ट नहीं खत्म कर रहा था मैं, इसलिए बोला था ना एक प्रोग्रेशन मेंटेन रहता ना और भी ज्यादा मजा आता। वो गैजेट्स का एवोल्यूशन, स्टोरी वाइज कैसे चल रहा है, वो सब तुम्हें पता चल जाता है। तो बाकी तो खेलने की इच्छा नहीं थी क्या? ये आर्कम नाइट के लिए इतना एक्साइटेड थे कि फिर वेट नहीं कर पाया। प्रोफेसर वीजली का असाइनमेंट। हाँ इम्पोर्टेंट है। 80% कंप्लीट हो चुका है।
100 स्पाइडर्स भी कंप्लीट हो चुका है. ट्रोल्स 15 ट्रोल्स बाकी है. क्रिसमस ट्री लगा सकते हैं. वो दोनों खेल रखा था. अच्छा तो वैसे बोलो ना फिर, खेल रखा था तो बोला ही नहीं है, खेल रखा था. बोल रहे हो डायरेक्ट खेला तो, अब बोलो दोनों खेल रखा था. मेरा भी काइंड ऑफ ऐसा सीन था कि मैंने, बाय द वे वेयर वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. मैंने आर्खम असाइलम खेल रखा था, आर्खम सिटी नहीं खेला था. और फिर खेल भी नहीं पा रहा था, कुछ इशू चल रहा था डायरेक्ट एक्स वाला. फिर मैंने खेल तो लिया आर्खम नाइट, फिर डायरेक्ट एक्स वाला प्रॉब्लम बाद में एक बार ढूंढा मैंने, 1-1.5 साल के बाद ढूंढा. अभी भी कलेक्शन अपडेटेड. Hello. Collect the field guide page in the underground harbor. Collect the field guide page from the book on intermediate transfiguration in the library. तो पहले यहाँ से तो बाहर निकलूं. गाइस जो भी देख रहे हो फटाफट से लाइक कर देना. यहाँ पे एक स्पीच बबल जैसा आ रहा है बट कोई दिख नहीं रहा है. तो इधर नहीं, इधर तो नहीं है. Makes no sense to me why Bhartiya's Revelio. Why should they escape the torment? I mistook as ये सब जगह पे थोड़ा सा ऐसा फ्रेम ड्रॉप करने लग जाता है.
यहाँ पे अच्छा ये एक हो Revelio. Underground harbor located deep beneath the viaduct courtyard is the landing for boats delivering first year students across the Black Lake to Hogwarts. Oh अच्छा जो पहले मूवी में कैसे वो इससे जाते हैं बोट से जाते हैं वो बोट से यहाँ पे डॉक करते हैं वहाँ पे स्टेशन underground harbor. Yeah, this is the underground harbor. तो वहाँ यहाँ पे डॉक करते हैं वो लोग और वायडक्ट कोर्टयार्ड ट्रैवल यहाँ पे लिफ्ट में आते हैं और ऊपर चढ़ते हैं Revelio. Lumos. क्या दिखा रहा है ये यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है If only. Get away, all of you! Revelio. इसमें आग लग सकता है क्या Incendio. इसमें आग नहीं लगेगा फ्रेम ड्रॉ Revelio. Lumos. आई थिंक यहीं कहीं पे तितली होनी चाहिए Revelio. इधर ही ऐसा ही टाइप का कुछ दिख रहा था मुझे Lumos. Revelio. Lumos. क्या गंदा ये Revelio. फ्रेम ड्रॉप कर रहा है भाई This is the first year my siblings and I are all at Hogwarts. Lumos. बेसिकली तितली को लाइट दिखा दिखा के उसको अपने अंधकार वाले पेंटिंग पे लेके जाना है हाँ मुझे लगा ग्लिच हो गया ओह यही वाला सही था इधर आ ही गया हूँ Challenges, if I can find any. इसके साथ खेल नहीं सकता कंचे खेल रही है बेसिकली कंचे ही लग रहा है मुझे तो Alohomora. Alohomora. कीबोर्ड माउस का कॉम्बो रखो कीबोर्ड माउस और कंट्रोलर सबका कॉम्बो रखो जहाँ पे जो कंफर्टेबल लगता है वो यूज़ करो अरे मैं भूल ही गया था रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में मुझे अपने कपड़ों को भी तो आइडेंटिफाई करना है
ओह, इस बार अच्छे अच्छे कपड़े आ गए। ये तो कितने टाइम से अच्छे कपड़े आ ही नहीं रहे। ये मिलेगा मुझे लेवल 36 पे, अभी 35 पे हूँ। इसको और लेवल अप कर लेंगे। अभी इसको वीव कर लेंगे। Phoenix with feather चाहिए। Phoenix feather चाहिए। Relieved to finally have an answer as to why. डिपल्सो पजल रूम 1 ये मेरे ध्यान में कैसे नहीं आया। मैं डिपल्सो पजल रूम 2 कंप्लीट किया मैंने, बट डिफिकल्ट था। अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा वॉक थ्रू वगैरह देख के कंप्लीट किया था। अरे দুটো এই রয়েছে। একই সাইডে রয়েছে। আরে আরো মিশিয়ে দিলে আরো। আছে রে বাবা, আমি দেখতে পাবো না বলে কি থাকবে না? We were merely musing on the state of affairs. I don't even Hello, find it Hamura. interesting.
गाइस जो भी देखो फटाफट से लाइक भी कर दे ना। Mine now, Demi guys. Mine now, Demi guys. डेमी गाइस मिले दिन में, अगर माइन नाउ डेमी गाइस बोलेगा सीधा रात करो और कलेक्ट करो। Revelio. पीव्स क्या कर रहा है पीव्स? Peasy has a special knack. It's tormenting Professor Black. Finite. ये बहुत फनी है ये वाला सीन। सर नीचे गिरेगा टप, ऐसे लग मर गया। Revelio. क्या बात करो, गोल गोल तो नहीं घुमा रही है? Handy resource indeed, your field guide. And most pleased to be included. पिछली बार भी तो ऐसे ही घूमा था मैं। आया 25, हाँ यही था। अच्छा मैं ध्यान दूसरी तरफ चला गया, उस चक्कर में वापस पूरा घूमना पड़ा। नो सर जी, कल कोई अच्छा गेम खेलोगे? यस, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। ओके अच्छा, ऊपर नहीं उठा सकते। मुझे लगा ऊपर उठाने वाला भी कोई सीन होगा। ये चला गया इधर। नहीं, फायदा नहीं है। गलत हो गया।
हाँ ये ठीक है। मुझे इसको हाँ ये कर सकता हूँ ना, इसको धक्का दे। अब ये भी ठीक है। करना क्या चाहते हैं भाई? ये तो सही है। ऊपर ऐसे भेज सकते हैं, इससे काम नहीं करता। भी एक तो एटलीस्ट और लगेगा। बहुत बढ़ रहा है। अभी चालू हो जाएगा।
Here. हाँ ये हो सकता है। Revelio. बस इतना ही है क्या? कोई दूसरा दरवाजा ओपन नहीं होता? मैंने साइड से सामान तो ले लिया। अरे शिंजो वेलकम टू द स्ट्रीम। राम राम सर, राम राम। ऐलान हो इधर? आई डोंट थिंक सो। अच्छा इधर ही एक ही था रूइंड स्टेयरवे। मुझे लगा और कहीं से एग्जिट होगा, शायद एक ही रूम में करके उन्होंने वापस एग्जिट उधर से ही करवा दिया। मेहनत बच गई। Revelio. ये तो मैंने अनलॉक किया था अभी थोड़ी देर पहले। कैसे हो शिंजो, कैसे चल रहा है सब? जॉब का क्या चल रहा है तुम्हारा? कंटेंट राइटिंग में रूम ऑफ रिक्वायरमेंट अपग्रेड 15 हो चुका है। 12 बार, अच्छा 12 बार रेस्क्यू करना है और ब्रीडिंग 2 बार करना है। यूनिक बीस्ट्स का करना है। ओके सब ठीक चल रहा है। ओके नेटवर्क वगैरह बन रहा है कि नहीं? मेन चीज तुम्हारा नेटवर्किंग का ही काम है अगर तुम्हें ग्रो करना है तो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करो, बात करो, जहां पे मौका मिलता है खुद के एंड से भी हेल्प करो। स्पेशली ऐसे सिचुएशन में जब लग रहा होगा कि सामने वाला हेल्प नहीं कर सकता। Revelio. ऐसे सिचुएशन में अगर तुमने हेल्प करके दिखा दिया तो सामने वाला अभी लग रहा होगा कि शायद हेल्प नहीं कर सकता, बट अपना पूरा जी जान लगा देगा कि अगर कहीं पे भी उसको मौका मिलेगा ना, अगर अच्छा है तो। अच्छे बुरे सभी रहते हैं, बट उतना सोचने जाओगे तो किधर से भी हेल्प मिलना मुश्किल हो जाता है।
It's a weekly assignment. छोड़ दिया मैंने एसएससी सीजीएल की कोचिंग करूंगा। अच्छा, ये सोच रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर लेता हूँ, वैसे भी प्राइवेट में तो करना ही है। हाँ बट जो एक्सपीरियंस मिल रहा था वो तुम्हारा चला जाएगा ना फालतू में। कर रहे थे वो, छोड़ना नहीं था। जो तुम्हें कोचिंग वगैरह लेनी थी साइड बाय साइड ले लेते, एक्स्ट्रा थोड़ा मेहनत कर लेते और क्या। Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. ऐसे खड़ा हूँ देख के ये मुझे बोल रहा है अरे बुक जो चाहिए वो ऊपर है। Revelio. ये पूछ रहा है, गायब हो जाएगा अभी। The book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? Did I'll she give now? you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. क्या बात है? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Okay, Snidget. अभी थोड़ी देर पहले एक जगह पे पढ़ा था। The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Felix Felicis. The Alihotsy drought. The pepper up potion. Felix Felicis. Well done. Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Deathly Hallows. The Founder's Relics नहीं, Horcruxes तो नहीं, Deathly Hallows. सर 31 को स्कूटी ली थी एंड अब पूरे 1000 किलोमीटर होने वाले हैं नेक्स्ट 2 डेज में। क्या बात कर रहे हो, कितना घुमा रहे हो? 1000 किलोमीटर इतनी जल्दी? ये क्या रैंक ग्राइंड चल रहा है क्या स्कूटी के साथ? The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? वो जिससे मारते हैं ना, ब्लजर। ब्लजर ही है शायद ना, waffle. The bludger. I'm sorry, but the correct Quaffle. answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, अच्छा, their team quaffle is बड़ा awarded होता, 10 बड़ा, points. okay. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Species. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. तो ये हरमाइनी तो बिल्ली बन जाती है। Again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic?
The Order of Merlin. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? The Ukrainian Ironbelly. No, I'm sorry, but the answer was the Peruvian Vipertooth. Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Quincy Hogg. No, the answer was Hengist of Woodcroft. It is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Hide behind. A Letherfold. That's incorrect. The answer was a demiguise. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Letherfold? Patronus तो नहीं होगा. The Knockback Jinx. Actually, the answer was the Patronus charm. क्या बात कर रहे हो? सारे The only गलत हो गए. survivor of a Letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? भाई साहब इतना डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. भाई 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस है. दुकान वाला भी सोचेगा भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगा दिया क्या. वही तो इतनी जल्दी 31st को जाके फुल रैंक राइन चल रहा है. लेजेंडरी पहुंचना है बहुत ही जल्द. 10,000 किलोमीटर जैसे कॉडम में होता है 10,000 पॉइंट्स, वैसे इसका भी पहुंचना है जल्दी 10,000 किलोमीटर. Who published the law of elemental transfiguration? Transfiguration Montpellier. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for सारे was गलत. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Never tickle a sleeping dragon. हाँ ये वाला पता है. Knowledge is the real magic. Live before you leap. Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? The Runespore. That's right. According to parcel mouths, each of the Runespore's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Ilvermorny School. Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Amatentia. That's the answer. Amatentia smells बाप रे, differently बहुत to every question पूछ रही है person, तो. according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. चलो ready. आप टूरू HP फैन नहीं रहे. 0 और 10 सर को. पहले वाले में आई थिंक एक मिस्टेक था, बाकी सब सही थे. सेकंड वाले में लास्ट के तरफ में अभी सही हुए थे. अरे इतना भी इन डेप्थ मैंने बुक्स नहीं पढ़े हैं ना, तो मुझे उतना भी नहीं पता है. थोड़ा बहुत पता है यहाँ पे जो लोर मैंने पढ़ा है. बुक्स पढ़ने पड़ेंगे फिर इतना इन डेप्थ अगर जानना है तो. आप टूरू क्या अर्नब वेबसाइट बनानी आती है? Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emeric the Evil was killed in a duel against whom? Sir Agravain. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emeric gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages when he was the master of the Elder Wand.
If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? By blatching, haversacking, stooging, haversacking. Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? ये शायद movies में भी है. Webbed feet, mackled malaclaw. Most probably webbed feet ही होगा. Webbed feet. No, the answer was bad luck. अच्छा. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Stink sap. Mimblus mimbletonia. Correct. The Mimblus mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper-up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? अभी इनके कभी नाम ही नहीं सुने. Bowman Ride, Basil Flack, Linfred of Stinchcombe. Bowman Wright. That's incorrect. The answer was Linfred of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Linfred's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? अर्नब वेबसाइट बनानी आती है. हाँ, द बेस्ट. अर्नब यूवी को आती है वेबसाइट बनाना. हाँ, वो बनाया तो है. किस टाइप का? शायद यूवी को भी आता है. यूवी तो बनाया है उसने, कुछ तो क्लाइंट का दिखाया भी था. गिफ्ट वगैरह भेजने का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. तो उसमें तो तुम्हें डेटाबेस इंटीग्रेशन भी चाहिए होगा ना. फिर फ्रंट एंड और बैक एंड इंटीग्रेशन वगैरह भी करना पड़ेगा ना. वो सब भी देख लेना. फिर पूरा बता दो. एक होता है वेबसाइट डिजाइनिंग, वो फ्रंट एंड में जो दिखेगा कंज्यूमर आके जो वेबसाइट पे दिखेगा वो चाहिए सिर्फ. या फिर बैक एंड इंटीग्रेशन भी करना है, जैसे डेटाबेस वगैरह इंटीग्रेट करना है वेबसाइट से, ताकि जैसे कितने गिफ्ट्स हैं, क्या है, वो स्टॉक में है नहीं है, वो सब पूरा नंबर्स भी रहे. कौन सी बना सकता है, शॉपिफाई या कस्टम? शॉपिफाई का तो आई थिंक कोई भी बना देगा ना. उसके लिए तो तुम्हें सीखना नहीं पड़ेगा अलग से. कमर्शियल साइट जैसे शॉपिफाई वगैरह का बनाना है. फिर और एक वो कौन सा वेबसाइट था, ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना रहता है बेसिकली. ज़्यादा कोडिंग वोडिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है. वो भी एक था W3 G.P.SOUMIK नाम था उसका. भूल गया अभी, काफ़ी टाइम हो गया वो उसका. W3 उस तो वेबसाइट का नाम था वो. उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप ही ज़्यादातर करना रहता था. The wizard and his wand. Incorrect. The answer was a single slipper. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Snallygaster. North America. That's right. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Sir Lancelot होगा शायद. Sir Lancelot. No, the answer was Sir Luckless. Luckless. The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? Kelpie? Shall Loch Ness Monster? The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the Kelpie's existence. The Office of Who was the first Misinformation. Minister for Magic? Cadmus Peverell. No, the first minister was Ulick Gamp.
Gant's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. मजा आया सही बताओ. This book is designed to help guide the student who wishes to pursue more complicated types of transfiguration. Professor Weasley often recommends it to her advanced students as a bit of a light reading. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Attend Transfiguration class during the day. Second favorite hero! आज जल्दी स्ट्रीम चालू कर दिया. हाँ, मैं बोला ही था अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा जल्दी स्ट्रीम चालू कर दूंगा. कैसे हो स्नेहाशीष? वेलकम टू स्ट्रीम. दोनों बना सकता हूँ. अर्रब जिसके लिए बनानी है उसके नंबर दे दूंगा. विक्स नहीं, विक्स तो कंपैरेटिवली नया है. हाँ, विक्स भी बोल सकते हो. एक उससे पहले भी एक था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा. वो भी डब्ल्यू से आई थिंक कुछ था. Uncle Roland sends his best. He often asks after you. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Taking owls a bit मेरा too literally, if है you जो ask बिजनेस me. स्टार्ट कर रहा है. ओके, आज जल्दी स्ट्रीम चालू कर दिया. उसको वेबसाइट या बिजनेस का नाम डिसाइड करके रखने बोलना फॉर डोमेन के लिए. नेम तो है उसका, वेबसाइट नेम या बिजनेस नेम, तो फिर हो जाएगा. 10% कमीशन मेरे को देना पड़ेगा. एकदम बढ़िया, आप बताइए. अरे बढ़िया, एकदम शुरू कर रहे हैं. क्लास अटेंड करने वाले हैं. ट्रांसफिगरेशन की क्लास होगी और एकदम जादुई कपड़े पहन के. ये प्रोफेसर वीजली है. अच्छा, मुझे लगा प्रोफेसर वीजली होगी. Settle down, settle down. क्या बुक को उल्लू बनाया था या उल्लू को बुक बना दिया? As you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. सेबेस्टियन भी बैठा है. वर्डप्रेस. हाँ, वर्डप्रेस, यस. भाई दिमाग से उड़ गया था वर्डप्रेस. ऑब्जेक्ट को तितली. Beautifully done. तो ये तो लाइफ क्रिएशन हो गया. ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई है. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know. You're quite close to Professor Fig, aren't you? I've always wondered about him. Never see him actually teaching. Never see him actually teaching. अब प्रोफेसर फिग बहुत कम पढ़ाते हैं वैसे. चलेगा शिंजो, एकदम बढ़िया. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed.
and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Yes. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. Thank you. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Extracurricular Was your activities. extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Thank you, Professor. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Training dummy. Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. Confringo! Needed a goblin. Meet me there, and bring someone who speaks goblin. Mentioning something about gobbledygook. Arrest those vessel. Expelliarmus! Incendio! Defender! चलो इसको तो हम लोगों ने टॉर्चर कर लिया. अभी मुझे क्वेस्ट करने हैं. 2 खतरनाक क्वेस्ट हैं. एक सेबेस्टियन का है और एक गॉबल्डीकुक वाला है. ठीक है, तो पहले सेबेस्टियन वाला करते हैं. चलो असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं. अभी 9 क्वेस्ट बाकी है. चलो फटाफट करते हैं. अर्नब, मैं नंबर दे रहा हूँ तेरे को एंड मेरे फ्रेंड को. तेरा नंबर बात कर लेना. मैंने 1.5 ईयर पहले डोमेन खरीदा था shinzo.com के नाम से. अच्छा, वो नंबर नहीं दूसरा दे रहा, वो देना उसको. ओके, दूसरे व्हाट्सएप पे भेजना. नंबर कौन सा जिसमें प्रोफाइल पिक नहीं है वो? हाँ, लास्ट में 3686 है. ओके हॉगवर्ट्स के अंदर का ही है. ठीक है, हो गया. दूर है. हाँ, चलेगा. यहाँ पे ये कोर्टयार्ड से उड़ के चला जाऊंगा. मस्त.
High wing, go! आप मस्त लग रहा है, बैकड्रॉप में हॉगवर्ट्स है। क्विडिच का स्टेडियम वगैरह, यहाँ पे ट्रेन वगैरह जो आती है। क्या बात कर रहे हैं? Past the high wing! उधर से जा सकता हूँ मैं? सर मैं दवा का काम शुरू कर दूँ। करना है करो, मेरे क्लास के लिए स्टूडेंट्स लेके आओ, मैं दूंगा कमीशन। और घूमते हैं। यहाँ पे कोई है क्या? म्यूजिक बंद हो जाता है। Tell you what. No one takes one. Incendio. Expelliarmus. Let's play predator and prey, shall we? Levioso. अरे हाँ, मैं भूल ही गया। Levioso! मुझे ट्रांसफिगरेशन करना है इसके ऊपर। Levioso! हो गया? You can't keep me down. Mon? Venite. Levioso. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. सब कलर ही फुल चेंज हो रहा है। Revelio. कबूतर है कि घोड़ा है कि और कुछ है? अरे हिपोग्रिफ तुमने देखा नहीं क्या हैरी पॉटर के उसमें हिपोग्रिफ भी आता है। सर मैंने सिंगम अगेन देखा, हाईली नॉट रिकमेंडेड, लाइफ टाइम ट्रॉमा दे सकते। वो तो देख के ही पता चल रहा था। जब मूवी उन्होंने ट्रेलर में दिखा दी तो फिर बचा क्या देखने के लिए। और रामायण के साथ वो लोग पैरेलल दिखा रहे हैं कि रामायण में ये लक्ष्मण है, ये है, ये जटायु है, वो रावण है। पिजन हॉर्स ओपी, मेरे को भी वेबसाइट चाहिए होगी .com। Sebastian. I thought my owl might pique your interest. Bolo Sebastian. I came as soon as I could. I finally realised what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well.
And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We deal blows. वही मजा आता है. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. After me? Sure. कितने आएंगे? आ जाओ. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Incendiary. Come up here and fight! That was meant for me. And Gringo. When are you going to give up? Expelliarmus. Dead. Incendio. Defender. Expelliarmus. Arresto Molensi. Revelio. और भी कोई बाकी है? कौन है भाई? पीछे दो जन. आ जाओ. डरते हैं क्या? Who's there? Incendio. Launch a transformed enemy with Depulso. Okay. Revelio. Rustic garb. नीचे जाता हूँ फिर. ये गायब हो गया वो. अच्छा पीछे यहाँ पे भी कोई सामान वामान है. चलो एक बार मैं ये केव वाला भी सामान. केव जो दिए है ना, केव में बहुत कम ही केव्स हैं जो कि थोड़े एक्साइटिंग वगैरह रहता है. अदरवाइज ये केव का ऐसे कुछ मतलब ही नहीं है. जाओ एक कपड़ा मिलेगा बस. इसको थोड़ा एक्साइटिंग रखना चाहिए था इनको. This is going well. We make a good team. We do at that. Yes. Once again, we can fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. अच्छा यहाँ से भी जा सकते हैं. नहीं, स्नीकिंग क्यों करना है? स्नीकिंग क्यों करना है? It's incendiary. Expelliarmus. Put me down! I could have been. How childish! Rather up way coming back this way. Incendiary. I will. और कोई? Revelio. Sendo. Protego. And the fun is over. Fun is a relative term.
It is, and that was relatively Revelio. यहाँ पे पिजन हॉर्स में कोई वेबसाइट हो क्या? सभी एक से बढ़कर एक घटिया एक्टिंग है। मैंने तो सेकंड हाफ देखा था मूवी का, फर्स्ट हाफ भी देख लेता तो मैं फिर कुछ नहीं देख पाता। सही है। भूल भुलैया 3 और दोनों के रिव्यूज बहुत ही गंदे आए हैं। सिर्फ एक ही बंदे का मैंने रिव्यू देखा कि बोला हाँ अच्छा है, कमेंट्स ने भर के रख दिया ये भाई तुम्हें तो पैसे मिले हैं, तुम डिसअपॉइंट नहीं करते हो, बोलते हो ना, इस बार तो पूरा डिसअपॉइंट कर दिया, पूरा पेड रिव्यू है, ये है वो है, पूरा कमेंट्स में बोलते क्यों फालतू का कचरे को हीरा बना रहे हो। आई थिंक यहाँ से स्नीक करने का ऑप्शन आ रहा था। हाँ यहाँ से स्नीक करने का ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पे भी कुछ कॉइन्स मिलेंगे तो वो भी उठा लेते हैं। 33 कॉइन्स। ओवरलुक माइन। भूल भुलैया 3 भी बोल रहा कुछ भी बना दिया है, कुछ भी कर दिया है। एंडिंग सबको तो पसंद नहीं आया, कुछ जन बोले कि हाँ ठीक है अच्छा एंडिंग था। Closed after accidents were reported. Now I see why. ये Shadow of the Tomb Raider खेलता तो उसमें ऐसा ही क्लाइंबिंग के लिए वो वॉल्स होते थे, इससे पता चलता था कि क्लाइंबेबल वॉल्स हैं। Loyalists are in here. Too many. They definitely think there's something here they want. Incendio. That ledge is awfully high. Any ideas? That ledge is awfully high. अरे अपने को आइडिया की कमी है क्या? हमें कोई आइडिया की कमी नहीं। अब भी करेंगे विंगार्डियम लेवियोसा, तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा। अरेस्टो मोमेंटम से उधर हवा में ही उसको ये रख दिया। इवन लेवियोसा करके भी रख सकते हैं। It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the solar eyes, or the famous fangs, or any number of endearing qualities, really. ट्रांसफॉर्मेशन हड्डियों की। Revelio. साइड से जाके कुछ ले सकते हैं। Revelio. नीचे जाके फिर ऊपर आ पाऊंगा ना? छोड़, बाद में भी आई थिंक ये लोकेशन जा सकते हैं तो उधर चले जाएंगे।
Smashing. Should have thought to conjure stairs. नीचे ही चला गया. Revelio. रिपेयर करना पड़ेगा इसको. Reparo. भाई मछली को कॉइन बना के उसको लूट लिया भाई 20 को. कुछ भी भाई. मछली को कॉइन्स बना दिया और वो बैग को लूट भी लिया. Revelio. क्या ही एथिक्स वगैरह की स्टडी है भाई. ये खतरनाक है. भाई तो शुरू में छोटे खत्म हो गया. शुरू होते ही खत्म हो गया. Incendio. Revelio. नीचे की तरफ जाएंगे तब मिलेगा. यहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा है. We're making quick work of them. Yes. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists always cared more. Lumos. समोसा मिला है. Unidentified back item. Reparo. रिपेयर. यहाँ पे है हड्डियाँ है भाई. स्केलेटन. Incendio. Lumos. ये यहाँ से गया था मैं. हाँ ये ठीक है. Incendio. Revelio. इधर आवाज़ें तो आ रही हैं. हाँ. Still not seen a single rune. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? I'm a goblin, not a toy! You are postponing! Hideous distraction! Bombarda. I hate
furry spiders with their head. You're making this too easy. Best the likes of me. Nice to meet you. We're not finished yet. You're not a bad chap. For a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. ठीक है, अभी क्या सीन है? और एक तीसरा. Above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Explore the chamber. Samosa mila hai. The world floated back to me as if in a watery haze. How long had I been unconscious? I only remember his eyes, empty of sorrow, yes, but also I recall feeling a sense of euphoria as I watched the pain vanish. But then everything started to turn when I fell. I must have hit my head. I neither feel nor see a mark, but the pain is throbbing. I can only hope it is not Black Death. At least he is no longer in pain. Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. यहाँ से I think वापस जाने का हमारे पास रहेगा. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Check on Sebastian. Revelio. Confringo. ये एक है. Revelio. और ये ऊपर जाने के लिए भी है. अच्छा. Reparo. नहीं, रिपेयरो नहीं करना है. मुझे करना है विंगार्डियम लेवियोसा. किधर है विंगार्डियम लेवियोसा? Wingardium Leviosa.
Arresto Novello. Revelio. अच्छा यहाँ पे ऊपर कुछ कॉइन्स वगैरह मिल गए। यहाँ पे सेबेस्टियन से बात करके आई थिंक वी कैन लीव। हमारा इधर का हो चुका है। वेयर इज सेबेस्टियन? If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. Well, this is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. बस सीधा अंडरक्रॉफ्ट पे। And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marunweem has suffered for it. Marunweem? It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. नेक्स्ट क्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं अब भी। गर्मा गर्म। टू डिफेंस में बढ़ेगा, ऑफेंस में कम हो जाएगा। इसके लिए कितना लेजेंडरी 36, तो मेरा क्या 35 ही चल रहा है क्या अभी भी? अच्छा
Congratulations. एक बार क्या क्या मेरे पास अनआइडेंटिफाइड सामान है वो आइडेंटिफाई कर लो. वापस गियर में जाके चेंज करना पड़ेगा. एक बार मैं इसमें ही कर दूंगा 36. अच्छा 2 एक ही आइटम थे. ये वाला आइटम को करना है मुझे. लेवल अप कर गए. उनको लूम के थ्रू भी अपग्रेड करना रहेगा. Off on another adventure, are we? Never revealed the charm of my potions, Professor, back when I was at school. It's not like her to forget. चलो मैडम जी बताओ. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in Plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No. It belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. बात तो सही है. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg?
Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. Concealment. As if she wasn't collared like the other dragons. That's it. Lightfooted's the word. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. क्या खून खून ही खून For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done it. Revelio. Revelio. That's a brilliant idea. Revelio. और यहाँ पे एक बैग है. Where are you, Smiley? There she is again. Thought you were joining us. I know you From a have your distance. hopes about the fighting ring, but the true galleons are in Acromantulas. You wouldn't believe how much Violet and I made a few days ago, not to mention Borneo's not half bad to look at. I see the bridge Anyway, wasn't spared her we'll be wrath home either. moving Good thing it's soon. fixable. Egypt, perhaps. It's such a relief not to be weighed down anymore. See you soon, Angus. How charming. They keep in touch with each other. Reparo. Fantastic. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Pity. She must have been starved to pick off a grapple. Or just raring for a fight. Revelio. अच्छा ये ग्रैपॉन. ये तो ताज़ा आग लगा हुआ है. What was that? फाइट तो नहीं करना ना. Oh, there's no turning back now. Remember.
thinking, but she'd still be able to smell you. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Keep up. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but get to that opening below her. If we can get to that entrance, we can get to the nest. She's leaving! Quickly! Brilliant. We're almost there. Why is Repair every it. bridge here broken? Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. अरे गिर जाएगी. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntowl Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. अभी Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. या ग्रैनी को तो अपनी पकड़ लिया. इसके ग्रैनी को पकड़ लिया होगा. So blind. Not saying I don't cast the odd cleaning spell when no one's looking. Revelio. Aloha Mora. Aloha Mora. Revelio. Legendary chest. इधर भी कुछ है सामान.
अच्छा यहाँ से डायरेक्टली मैं दुकान में जा सकता हूँ। I've acquired what muggles call a loot. Revelio. Sleepy and Sons. ये पहले देखा था क्या मैंने? Tea shop decor, reflective of proprietor Mrs. Steeply's taste. This tea shop is awash in the color pink and frills. A cheery, tinkly bell chimes whenever a customer enters. बात तो सही है. Revelio. मुझे तो कुछ ऐसा टिंकली बेल चाइम्स वगैरह सुना. Appreciate you having a look. Get your daily profit. पेपर भी पढ़ सकते हैं. सही है. A call for peace. Tensions on the brink. Read all about it. It was an accident. Basilisk breeder insists. The Cornish wizard arrested for breeding basilisks Daily profit. has insisted that it was all simply a silly mistake. He was taken in after a routine inspection revealed toad infestations in all 5 of his chicken coops. Basilisk breeding has long been forbidden by the ministry. Extra, extra. However, due to the potency, rarity and value of basilisk venom, it is perhaps not surprising to know that the less rule-abiding among us have skirted the law. As explained by a neighbor of the wizard in custody, a shrouded figure who has chosen to remain anonymous, the way to make a basilisk is by hatching a chicken egg beneath a toad. Every wizard with a wand knows that. ये क्या scene है? The Cornish wizard has pleaded total ignorance as a defense before the Wiesengamot, claiming that his chicken co-ops are simply irresistible to toads and that he had no knowledge of the basilisk breeding process. His defense was met with widespread skepticism by members, with the exception of Belinda Brown of the Department of Regulation and Control of Magical Creatures, who said, "I have no doubt he's that much of a moon mind. We had told him we were coming, and didn't we? All he had to do was move the toads." Hope you have a magical day. Don't forget who gets you the news. All the latest wizarding news right here. अच्छा, गले में वॉन्ड लगा के वो दूर तक आवाज पहुंच जाए. इधर सामान बेच सकता हूँ तो बेच देता हूँ कुछ सामान. What do we have here? A demiguise. I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. गैलेंट्री केप 500 में मिलेगा. 88. Corduroy robe. 103 के ग्लव्स. तो ये एक बाय करता हूँ. मेरे पास 91 18 डिफेंस तो मैं लगा लूंगा.
I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a Gladrak's promise. 86 ठीक है. You won't be disappointed. That's a Gladrak's promise. दोनों ही आउटफिट में आता है ना. I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still, it takes all sorts. ये बेचने को बहुत टाइम जाता है. 30,000 लेकिन हो गए. 30,000 प्लस हो चुका है. ये रखता हूँ अभी फिलहाल. फायदा नहीं है. यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा है, इसको बेच देता हूँ. ये तो अब भी खरीदा, ये भी खरीदा. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Revelio. ठंग 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 चली जा रहा है. सर जी आर्मर बेच रहे हैं. आर्मर कपड़े जो भी बोलो. टंग 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 टंग. यही चल रहा है. टंग 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 टंग. गियर बदलना है मुझे. बस इतना ही बाकी है ना. ये चेक करना पड़ेगा. तो ये एक्स्ट्रा गियर ये भी बेच देता हूँ. प्रॉब्लम क्या है ना, गियर से ही पैसे मिलते हैं ज्यादातर केसेस में. और जगह भी कम पड़ती है इसके लिए. लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं. I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still, it takes all sorts. I suspect you have a sharp eye for fashion. Thank you. Hogwarts में जाके सीक्रेट रूम में जाना है. हरिपुत्र करके भी तो एक मूवी आया था. उसको फिर कुछ तो कॉपीराइट का पंगा हुआ था. फेरी ग्रीन सॉसर है. बकवास बकवास है बकवास. इनके ही बाल नहीं है. एक फीनिक्स के बाल नहीं है. और ये ग्रैपहॉर्न का हॉर्न नहीं है. फीनिक्स फेदर, ग्रैपहॉर्न हॉर्न. बाकी तो मेरे पास सारे ही हैं. यूनिकॉर्न भी मुझे मिल गया था.
क्या पोशन मेरे पास नहीं है? थंडर ब्रू, ये ही तीनों ज्यादा मिल रहे हैं, ये तीनों सबसे कम यूज कर रहा हूँ। इनविजिबिलिटी थोड़ा यूज करता हूँ बीच में। अच्छा, फीलिक्स फेलिसीज, अच्छा वो फीलिक्स फेलिसीज है क्या? फीलिक्स फेलिसीज इज लिक्विड लक। विगन वेल्ड नहीं है, मैक्सिमा नहीं है, इनविजिबिलिटी मिला है। Revelio. हाँ अभी है यहाँ पे फीलिक्स फेलिसीज और भी करता हूँ मैं। फिर क्या क्या चाहिए रहेगा वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। 110 बना सकता हूँ। 1 इन गेम डे में हेल्प करेगा। नीजल का, ओ नीजल का भी बच्चा है ना, एक जगह खाली रखा है फिर वो। एक्टिव बीस्ट्स, जॉबरनॉल के कोई बच्चे हैं? तो एक और ब्रीडिंग करना है, ब्रीडिंग वाला सीन भी हो जाएगा। वो किधर है? कैलिग्रो या क्या उसका नाम है? हाँ, और एक हिप्पोग्रिफ था, वो कहाँ पे गया?
सीनरी बहुत सही है गेम की, सीनरी तो सही में बहुत सही है। उसके साथ साथ ये मतलब वाइवेरियम एक हो गया, एक वाइवेरियम हो गया, दूसरा टाइप का रात का टाइम है। ऊपर ऑफस्प्रिंग Revelio. यहाँ पे निफलर एंड फूपर दोनों का हो चुका है ब्रीडिंग। निफलर एंड फूपर। डेरिकॉल, अच्छा दोनों मेरे पास मेल है, एक फीमेल ढूंढना पड़ेगा। डेरिकॉल का और एक ढूंढना पड़ेगा तब जाके। बट डेरिकॉल ऑफस्प्रिंग भी तो एक था ना, कहाँ पे गया? निफलर ऑफस्प्रिंग इतना छोटा। इधर मेल और फीमेल इकट्ठा करने पड़ेंगे तब जाके ब्रीडिंग वगैरह हो पाएगा। ये सेकेंड वाइवेरियम हो गया जो कि ऐसा रात वाला टाइम है। ये बीच वाला सिनेरियो है पूरा, वो स्वैम्प वाला सिनेरियो वैसे समझ लो। यूनिकॉर्न भी है। यूनिकॉर्न मैंने और भी ढूंढने का कोशिश किया, मिला नहीं था मुझे। ये तीसरा जो हैरी पॉटर को बहुत ज्यादा फॉलो किया है ना, उसको तो बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। Settle yourself. I mean you no harm.
good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets? Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan.
हेलो। हाँ चलो, आवाज आ रही है, इसको फिर से रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। यस, रीएक्टिवेटेड। चलो, थैंक यू अर्नब बताने के लिए। आज खत्म करने का प्लान है। कैमरा फ्री सर को पेट्रिफिकस टोटालस देती है। हाँ, आज खत्म करने का प्लान है। Slow coach. Revelio. बहुत दिनों से हैरी पॉटर नहीं देखा था। हैरी पॉटर देखने का भी बहुत मन है अभी, क्योंकि रेफरेंसेस और भी अच्छे से समझ में भी आएंगे। जो ऐसे छोटे मोटे रेफरेंसेस होते थे, Hello there. वो और भी क्लियर समझ आएंगे। Hello, Hogsmeade. Hogsmeade. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Thank you for being willing to help. You are very welcome. I'm looking... Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the... डायरेक्टली हॉग्समीड चलेंगे क्या? नहीं, हॉग्समीड नहीं है। ये कौन सी जगह है? उड़ के जाऊंगा, उड़ के। मिड पॉइंट पे फास्ट ट्रैवल कर लिया, अभी यहाँ से उड़ के जाएंगी। High wing, go! म्यूजिक भी सुनना है ना। एनिमीज वगैरह को अपना प्रेजेंस नहीं पता नहीं चलना चाहिए। अरे म्यूजिक नहीं चालू हो रहा है अभी तक। Past the high wing. एस्ट्रोनॉमी रेवेलियो करते करते जा सकते हैं। रेवेलियो में तुम्हें थोड़ा बहुत ये पता चल जाएगा। अगर कहीं पे उतरना रहेगा तो पता चल जाएगा। म्यूजिक नहीं बज रहा है, शायद मिशन में जा रहा हूँ इसके लिए। मेन मिशन है ना ये, क्वेस्ट का मिशन।
No need to race now, my friend. Chalo, Lord Gog. Bolo. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Hogsmeade. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Hogsmeade and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. The door is looking at us. सर और कितना घंटा बाकी है इस गेम को खत्म करने में? I think 10 So rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. कल परसों खेलेंगे नहीं तो 3-4 दिन और खेलेंगे हो जाएगा. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship, Rebellion. Circular device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. आ जाओ Hogsmeade.
इनविजिबिलिटी, हाँ उसको इक्विप करके रखो। बट इनविजिबिलिटी बहुत कम टाइम के लिए होता है। I still can't believe we're inside a Revelio. I've read about mines like this. See, something else altogether. One less kill. You'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Revelio. फाइट लेना है कि नहीं लेना है? सर्च फॉर एविडेंस। I could fall dead asleep on my feet, I could. Matter of time till we gets to Tanis. What was that? That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Hogsmeade. You have my word. We're being watched. By a door. Revelio. इधर तो कुछ भी नहीं है। We won't get through as long as we can be seen. Revelio. Get free. क्या बात कर रहे हो? 10:30 महीना सता है ये हफ्ते का, मत सो। कौन बोल रहा है तू? सहने ये ले, सही है। मत सो। I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. ऊपर कैसे जाए? ऊपर जाने का कोई रास्ता है? यहाँ से साइड से ऊपर जा सकते हैं? अच्छा ये है क्या? Revelio. लेजेंडरी चेस्ट है भाई, छोड़ नहीं सकते लेजेंडरी चेस्ट। Let's take a look around, Hogsmeade. See if we can find any plans. Bound to a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Revelio. Yes. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Empty-headed? Yeah, empty-handed. Chandrika. अच्छा ऑलरेडी चल ही रहा है वो, धीरे-धीरे चल रहा है। Revelio. क्या करूँ सर, मुझे एक्सट्रीमली बोरिंग लग रहा है ये गेम। सॉरी। हाँ तो लगेगा, तुम्हें हैरी पॉटर में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो डेफिनेटली लगेगा। हैरी पॉटर जिनको इंटरेस्ट है, जो लोग फॉलो करे हैं, उनको जमेगा ये गेम, तो पहले से ही बता।
बाकी के सर के ऊपर से जाएगा। I'm quite good at sneaking about. You'll see. The trick is to take to fight. Someone, where'd they go? Arrest them. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building. Revelio. ठीक है, हो गया और कुछ बाकी है? तो 67, अच्छा यहाँ से जा सकते हैं। If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. भाई ये गेम बहुत ही मस्त है यार। अरे उसको हैरी पॉटर में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो कैसे उसको समझ में आएगा? जिनको हैरी पॉटर जिन्होंने देखा है, जिनको वो दुनिया पसंद है, वो लोग ही इसको एंजॉय कर पाएंगे। बिकॉज इसमें बहुत लोर बोलते हैं, जो स्टोरी जो रहती है, बहुत स्टोरी हैवी है, लोर हैवी है ये। और एक्सप्लोरेशन इसका सबसे बड़ा एंजॉयमेंट का सीन है। Yes, of course. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. Revelio. This is more complex than I had expected. Confirmed. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. इस तरफ जाने का कोई रास्ता यहाँ से तो नहीं है। राइट साइड में कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में हाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं। Revelio. Hariputra on top, always. अर्ली 2000s में बहुत क्रेज था इसका, क्योंकि तभी तो उतना नेट वगैरह का नहीं।
Revelio. Blow up a loyalist sentinel with bombarda while they charge the magic launch. पहले तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन bombarda के लिए। हाँ ये तो ठीक है, bombarda सही है। Revelio. इधर मैंने की है क्या ऑलरेडी? नहीं, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं आ गया। वो लूटने का क्या सीन है? तो वहाँ से तो हम लोग एंटर हुए थे। एंटर होके फाइट कर रहे थे। Revelio. मैंने तो बहुत लेट देखा था सर ये। अच्छा, अर्ली 2000 से बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मेरे दोस्त इतने सारे बुक्स लेना ही है पहले, मतलब जब लॉन्च होगा तभी लेना है। छुपना पड़ेगा पहले। Right. Don't wish to be seen, do we? इधर पहले आग लगाना, तब जाके वो काम करेगा। Revelio.
ये लिफ्ट से मेरे को कहाँ लेके आएगा? अरे टेलीपोर्ट होके आ गया। Revelio. Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. क्या सीन है? टेलीपोर्ट हो गया। मुझे अभी भी याद है स्कूल में भी डिस्कशंस हुआ करते थे थोड़े बहुत इसके लिए। अच्छा, ये वापस जाने का रास्ता है क्या? वापस जाने के लिए होगा। सीधा भाग के रहूं। टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल वाला। भाग करो भाग करो भाग करो। अच्छा इधर नहीं है। 3 गोल्ड कौन रखता है भाई? मैंने तो लॉकडाउन में देखना चालू करा था। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अभी तक एक ही देखा है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख नहीं पाया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का भी बहुत क्रेज था, बट उतना ज़्यादा नहीं था जितना हैरी पॉटर का था। हैरी पॉटर जैसे This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. Revelio. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Omid. Now that we know what they're up to, we can get out of here. अरे एक बॉक्स रह गया। छोड़। Revelio. Aloha Mora. Aloha Mora. Revelio. अरे हाँ, पेंगुइन भी देखना है बाकी। लास्ट टाइम अच्छा वीगन वेल्डर लास्ट टाइम यहाँ पे नहीं देखा था, मुझे लगा सेम ही रास्ता होगा, कुछ ध्यान नहीं दिया। We're almost out of here, Omid. Look, the lift.
A welcome sight indeed. ऐसे जब बोलते हैं यूजुअली तो करने के टाइम में एक मिनट 34 ये लुक द लिफ्ट क्यों बोला फिर? Speak with Amit. Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. अब वो एकदम पहला वाला जो made था of goblin metal but was unable to open it. एकदम गेम के स्टार्टिंग में जो दिखा था हमें. She wanted to work together. Miriam, हाँ वही लग रहा था. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Cock, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war.
I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. भाई लॉर्ड गॉग का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, वॉइस एक्टिंग एंड जो मोशन कैप्चर जो भी किया होगा बहुत ही सही है। It's all gobbledygook. Revelio. लास्ट टाइम यही लिफ्ट से स्टार्ट किया था ना, इसलिए बोला होगा। हाँ, वो भी हो सकता है। कलेक्शंस क्या चीज है ये? विच मैनिक्विन्स? ये सब फालतू की चीजें जबरदस्ती की ऐड की हुई है, कोई मतलब नहीं है। I hope Professor I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. हॉग्समीड जाना है मुझे, हॉग्समीड पहले। म्यूजिक क्यों नहीं बज रहा है? High wing, go! म्यूजिक के लिए ही तो मेनली चढ़ रहा हूँ। इसका स्पीड भी आई थिंक ज़्यादा है। म्यूजिक ही नहीं बच रहा है, कुछ या तो ग्लिच हो गया है समहाउ। कपड़े वपड़े आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा कपड़ा मिलेगा तो उसको लूम में अपग्रेड कर सकता हूँ। हाँ, गोल्डनाइट स्पेक्टेकल्स। एक 106। उसके लिए मुझे 36 लेवल जाना पड़ेगा, अभी 35 पे अटका हूँ। क्वेस्ट आया है, हेडमिस्ट्रेस स्पीक्स, स्काई इज द लिमिट। हाँ, ये वाला एक चाहिए। इनविजिबिलिटी पोशन। चलो मैं आता हूँ वॉशरूम से, तब तक 4 इनविजिबिलिटी पोशन हो जाएगा यहाँ।
We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Okay. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Potato! गाइस जो भी देख रहे हो फटाफट से लाइक कर देना अगर ये विजार्डिंग वर्ल्ड की दुनिया पसंद आ रही है तो। How nice to see you, my young friend. My advice when dealing with untoward matters is... Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. ठीक है। You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flighty. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can... Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwan. However, if you're flying high above them, you... I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing... I look forward to our next meeting. We treated our house elf quite well. She had her own choices. ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको रखता हूँ फिलहाल के लिए। ये भी बेच सकता हूँ इसे, सही बताऊँ तो। हाँ, ये बेच देता हूँ। Listening to you lot go on about your children makes me grateful for my loyal trust. Dark wizards are greedier than Nicholas and meaner than trolls. Thanks for stopping by. Hope to see you again. काफी टाइम के बाद कुछ खर्चा होने वाला कुछ हुआ। Speak with Imelda Reyes. 5 kilometers. मजा आता बट क्या करे, अभी फटाफट पहुंचना है, टाइम लग जाएगा नहीं तो। और ट्रोल मारते हैं, चलो। फ्लिपेंजो Chandrika, Defender, Expelliarmus, Bombarder. Potato. Defender, Chandrika, Expelliarmus. क्या बात कर रहे हो, एकदम One less foul hulking brute. पाट 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 खत्म। ये तरीका पता नहीं कितने को बताया, यहाँ से जंप मारो। The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Ravenclaw, over here! Hello again, Imelda.
This course is a bit far from the castle, isn't it? Bit far? Obviously. बहुत far है. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. That wasn't too difficult. If I do say so myself. Brilliant. This is going well. Did anyone else see that? That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do.
Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pot me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad for a Ravenclaw. You take care of yourself. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. You up to now? हेलो हाँ आ गया आवाज आ गया कैमन माइक गया हाँ हाँ तुम्हारा चैट पढ़ते टाइम ही देख लिया मैंने नज़र पड़ गई कि कैमन माइक गया एनीवे ओला मुला भी उठा हूँ सोकर गुड मॉर्निंग मैं वही सोचा बोला संडे को आयरन मैन नहीं है क्या हो गया How's my favourite test flyer? सो ही रहा होगा Thanks for stopping by. Hope to see you again. Hello again, Mr. Weeks. Fantastic! Your broom performed well. The best upgrade yet. It flew beautifully. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. चलो बढ़िया. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. मैं 3 बजे सोया था इसलिए. अच्छा दोपहर को 3 बजे. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. आज मैंने जल्दी स्ट्रीम किया था. 3:30 बजे स्ट्रीम चालू कर दिया था. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. Revelio. यहाँ पे ही तो कहीं पे दिखाया था कि और एक कुछ क्वेस्ट या समथिंग है. Hello, pardon me. Hello there. Was there something you needed? Hello there. Hello, I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop. And Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. क्या बात कर रहे हो, Penny? Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop.
She has had rotten bad luck with the last few tenants. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. What kind of things would I be able to sell in the shop? All kinds. Anything from essence of Disney to mooncalf fur. If a buyer exists for something, then Penny can sell it and get the best price. Just ask Mistress Mason. Why are the premises in such disarray? Oh, the previous tenants were not able to manage very well. They seem to have given up rather quickly. Penny is perfectly capable of helping clean and repair, so the shop will be ready for business in no time. How is it you're so good at selling? Seems unusual for a house elf. Oh, before he died, Penny's previous owner, Master Mason, trusted her to do all sorts of things to help him with his shop. Penny supposes it is a bit unusual for a house elf to possess such skill, but Master Mason commanded it, and Penny was happy to oblige. Master Mason was a wonderful master. All right. I shall go and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. स्कूल You में can पढ़ाई find कर रहा है. Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work बिजनेस with भी you. चालू करेगा पढ़ाई करते करते. गजब है भाई. कहाँ है? I love the calm and peaceful medieval type environment of this game. फिर तो विचर और भी मजा आएगा. बट विचर खेल नहीं सकता. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Why, yes. Yes, I do. Are you interested? Yes, I am. I've always wanted to own a shop. Lady Dobby. Marvellous. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking, don't you think you might be a tad young to own a shop? I have a knack for this sort of thing, if I do say so myself. If I can meet your terms, I hope that you'll sell to me. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back. At a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Ha! Your faith in me is overwhelming. You're sorely mistaken if you think I'm going to fail. There's that confidence again. And, of course, I wish you every success. Do we have a deal? What precisely do you mean, should my efforts fail? Honestly, I only mean that if for some reason you're unable to keep the shop going, I could help you cut your losses. That's all. But, as you've implied, the odds of that happening are remote. मतलब कुछ तो है, कर्स वर्स वाला सीन तो नहीं है. The shop seems to be in an ideal location.
Why has no one purchased it yet? It is indeed. But I've just decided to sell. I've grown weary of being a landlady. My late husband was the one with a passion for shopkeeping and business in general. You'd be wise to take advantage of this opportunity before the offers start rolling in. It looks to be rather a mess. Why haven't other tenants been able to make a go of it there? As you've no doubt considered, running a shop is not as simple as those less savvy might think. The new owner, however, will have something that previous tenants did not. The benefit of Penny's particular prowess. Her assistance will make all the difference, I should think, in both getting the shop ready for business and ensuring its success. It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well, but I won't be able to keep the shop. If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Collect 1500. Madam Mason, 1500 तो चाहिए. about the shop. Yes? I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I am indeed. And brave. You won't be sorry. Give me the money. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organised, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavours. Penny will meet you there. हो गया चलो खरीद लिया दुकान खरीद लिया पेपर वर्क भी हो गया समझ लो I love these types of adventure movie series light सी काम सी रिलैक्स फील होता है देखते वक्त आप वो तो अभी तो अभी का जस्ट देख रहे हो थोड़ी देर पहले देखते हैं ड्रैगन से फाइट करके गॉब्लिन से फाइट कर रहे हैं अमित तो परेशानी हो गया था Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Well then, let's get to it. Penny is ready. चलो देखते क्या क्या Between करना the है two of us, we should have this place up and running in no time. Repair. Oh, Penny can already see the potential. This will surely be the most successful shop in Hogsmeade. By what we've accomplished, Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh yes, she mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Are you holding your breath again? Penny must get back to work now. अरे हाँ चिट्ठी आई है चिट्ठी का कंटेंट क्या है एलबी वीक्स एलबी I'm truly on the final form of get stop by speed which is when you can ठीक है जाऊँगा अब भी थोड़ी देर में जाऊँगा open the mysterious chest Rebellion. Keys तो नहीं लेगा
मुझे लगा खींच भी चलेगा ऐसा। अरे एडवेंचर्स मूवी में ड्रैगन, फिर तो और भी मजा। ड्रैगन को पहले हम लोगों ने बचाया। ड्रैगन का अंडा हमारे पास था क्योंकि मादा ड्रैगन थी, फिर वो मादा ड्रैगन को अंडा रिटर्न करवाया। फंसाने का प्लान तो नहीं था ये। Revelio. Reparo. Revelio. Lumos. इतनी सारी चीजें। Reparo. Confringo. Revelio. That's odd. Why would someone store one hat in here? Revelio. चल क्या रहा है? That's not very hospitable. Oh, goody! Someone to play with. You seem to have your wits about you. What fun this will be. Fastidio. For me, at least. That's new. Onwards, I suppose. What in the... Who's there? Confringo. Lumos. Confringo. Lumos. Confringo. Lumos. ऊपर कैसे जाए? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. यहाँ से सब कुछ बंद करते हुए Lumos. Bats. Lovely. Revelio. Seems as if I should hang something there. Lumos. These lanterns must belong somewhere. Accio. Wingardium Leviosa. ये यहाँ पे ही आएगा। Perhaps the lanterns are meant to be hung on the hands. How enlightening!
you might survive a bit longer than the others. Lumos. Oh, you've come so far, so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. What's the saying? Two sides to every story. Unfortunately for you, both sides hear it to my story. And you'll have to compete to get to the end. Revelio. Lumos. Ah, you've chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. Lumos. अच्छा यहाँ पे लाइट लेके आना पड़ेगा. Revelio. Escape. Where did you buy this game? Epic Game Store. ये वही शॉप है जो इसने खरीदी है. हाँ. फिर इसने वो जो विडो थी उसने बोला कि मेरा हस्बैंड का सामान है, प्लीज हेल्प कर दो सामान लेने. कहाँ कहाँ रहा हूँ वैसे मैं? गलत डायरेक्शन जा रहा हूँ क्या? Oh, deja vu. What? अच्छा, सॉल्व करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा. यही है. Lumos. Lumos. अच्छा, वो अटैक करते जाएंगे. Revelio. Lumos. क्या गोल गोल घूम रहा हूँ मैं. भाई ये वाला सही में डरा दिया था भाई. ये वाला सही में डरा दिया था. What the hell? Revelio. Lumos. सही है ना ये वाला लेवल? तो खतरनाक है. Oh, how nice of him to pop in.
Revelio. Lumos. How much on Epic? It was 1200 when I bought it. Protego. Lumos. 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 अरे escape कैसे करूँ? गलत जगह जा रहा हूँ। Lumos. Stupefy. Lumos. एक तो अंधेरा। Confringo. Defender. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Lumos. Home sweet home. Wingardium Leviosa चाहिए मुझे. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. एक यहाँ का हो गया. Revelio. सेकेंड और एक चाहिए रहेगा. Lumos. सीएम हाँ एक मिनट. काफ़ी आगे बढ़ा दिया स्टोरी आपने तो. हाँ ये वैसे साइड क्वेस्ट का पार्ट है ये, बट बहुत खतरनाक पार्ट है. इंसेप्शन. अच्छा वो एक्सप्लोर करना ही था क्या? It's always good to have a different perspective on things. Revelio. कुछ मुझे तोड़ना पड़ेगा. Revelio. Lumos. अच्छा ये अप डाउन वाला मुझे यहाँ पे इसको अप डाउन करना पड़ेगा ऐसा कुछ है. Wingardium Leviosa.
ये वही शॉप है जिसने खरीदी है। Where did you buy this game? मैं पे काफ़ी बढ़ा दिया। ये शॉप खरीदी है या महल ही खरीद लिया इतनी बड़ी? अरे वो तो हैरी पॉटर का उसमें एन्चेंटमेंट ही होता था ना ऐसे सिचुएशंस में। So much fun to be had. My head is spinning. Revelio. इसको मैं गैदर नहीं कर सकता। नहीं, इसको गैदर नहीं कर सकता, तो मुझे और ही ढूंढना पड़ेगा फिर। या इधर पीछे जाने का कोई रास्ता है? Lumos. इधर भी एक लाइट चाहिए। सही है। ऐसे टाइप के जो मतलब लेवल्स वगैरह होते हैं ना, दिमाग घुमाने वाले होते हैं, बट मज़ा आता है बहुत। रेयर है क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है भाई, इतना सोच सोच के बनाना, सामने वाले को पजल करना। मतलब तुम्हें तो सिर्फ सॉल्व करना रहता है, बट सामने वाले को तो ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो सॉल्व करने जाए उसको मज़ा आए। अच्छा, चेंज हो गया पूरा। ओ भाई साहब। Wingardium Leviosa. नहीं जा सकते भैया, ये हमने कर दिया है ब्लॉक। Lumos. Revelio. Lumos. अरे ये क्या बदतमीजी है, मेरी फिर से आंखें क्लोज होने लगी। अभी तो मैं सोकर उठा था, मुझे मजा आ रहा है देखने में, कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गया। अरे ओ इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। Wingardium Leviosa. Revelio. Lumos. एक वो हॉरर का एक Perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. आवाज आता है ना एक प्रॉपर इसका हॉरर वाला एक ट्रैंग, स्पेशली हिंदी वाले इसमें तो बहुत होता था। Wingardium Leviosa. Revelio. Lumos. All books and no play make one quite dull indeed. Accio. Wingardium Leviosa. चलो हो गया कंप्लीट यहाँ का। Revelio. Explore the library. Entertain faster.
Collect yourself, if you can. Ta-ta for now. हो गया, यही था क्या एंटरटेन? बच जाना ही एंटरटेनमेंट था भाई। ऐसे देखने में तो बहुत एंटरटेनमेंट है, रियल लाइफ में हो जाए तो फट के 4। अच्छा ये एक साइड का हुआ है, अभी दूसरे साइड जाना है भाई। क्या बात कर रहे हो, हड्डियां हड्डियां ही हड्डियां हैं यहाँ पे भाई। कितना एंटरटेनमेंट होगा भाई। I simply adore this blooming place, don't you? You know, foliage, like most living things, Chandrika! I wonder if I need to place lanterns to open these doors. इधर भी लैंटर्न्स चाहिए। Revelio. लैंटर्न्स चाहिए। अच्छा अभी यहाँ पे Lumos. आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया भाई। Lumos. आग लगा तो दिया है फिर भी चल ही रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं पहले। यहाँ पे एक लैंटर्न लेके लटकाना है। चल क्या रहा है भाई साहब, कर क्या रहे हो? Wingardium Leviosa. वो तो बंद कर दिया इन्होंने। Revelio. भाई रेड रेड इतना सारा। ओ चेस खेलना है। सर जी गेमिंग रूम वाला बैकग्राउंड लगाओ, ये ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी से होली सेलिब्रेट कर रहे हो। Oh my God, I don't want to sleep yet. I want to enjoy my one day leave at least. मेरी फिर से आंखें बंद हो रही है, बॉडी टायर्ड है, इसके लिए हो रहा है। Revelio. What's this? A game within a game? Ooh, knight to h3. Nighty night. तो मेरे पास रेवेलियो है ना, रेवेलियो से कौन से खतरनाक वाले हैं सब मैं उस पे नहीं जाऊंगा। Bombada. Revelio. This is a big touch. Revelio. That wasn't too difficult. That wasn't too difficult because मेरे पास ये था, जैसे एक रिडलर करके एक पता रहेगा ना डीसी का कैरेक्टर। This is a big touch. तो वो रिडलर का एक रिडल रहता है जिसमें एक को बचाना रहता है, तो लिटरली वो हमारे साथ चीटिंग करता है और हमारे पास बैटमैन हमारे पास एक डिटेक्टिव विजन रहता है, तो डिटेक्टिव विजन से हम देख सकते हैं कि वो चीटिंग कर रहा है और हमें गैस करना रहता है, तो हम वो डिटेक्टिव विजन के थ्रू सही गैस कर लेते हैं। I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer.
तो ये अपना रेडलर बोलता है श्योरली यू हैव चीटेड, आई नो यू हैव चीटेड, इट इजंट पॉसिबल। तो इसके लिए इजी हो जाता है क्योंकि उसके पास डिटेक्टिव विजन था। नॉर्मल कोई आदमी रहता तो आराम से वो चीट हो जाता, खुद चीट हो जाता। Wingardium Leviosa. Lumos. ऐसा लगा किसी का फुटस्टेप जैसे आया। Accio. Wingardium Leviosa. एक साइड का हो चुका है हमारा सॉल्व। दूसरे साइड का Revelio. Lumos. Protego. Lumos. Lumos. क्या बात कर रहे हो? Bombarda. Confringo. Bombarda. Lumos. बहुत सही डिजाइन किया, बहुत सही। Lumos. Oh, I'm afraid of the dark. Does it worry you that I can see you, but you can't see me? You can't see me, John Cena. Accio. Wingardium Leviosa. Lumos. I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable for what's in store, do I? Protego. Lumos. 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 Revelio. ये तो ठीक है। अच्छा मुझे मिडल में भी Lumos. लैंप लगवाना पड़ेगा। Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Lumos. आयरन मैन सो जाओ, थोड़ा रेस्ट ले लो। कांट इवन एंजॉय माय फ्रीकिंग हॉलिडे। सर जी मुझे गुस्सा आ रहा है, दिस इज बुलशिट। बट अभी बॉडी नहीं चाह रहा है तो क्या कर सकते हैं। सही अरे कहाँ एक्यो कर रहा है भाई? इधर Wingardium Leviosa. Only 2 lanterns, but 3 spots. Perhaps I should move them around to open the door and build the platform. पहले वाले पे जाना पड़ेगा क्या मुझे? Lumos.
इधर से खींचता हूँ फिर। क्या बात कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद हो गया? Lumos. अच्छा, इसको यहाँ पे खींचा तो वो दरवाजा बंद हो गया। Wingardium Leviosa. सोचो दरवाजा क्यों बंद हो गया? वहां से जैसे ही मैंने खींच लिया उसका इफेक्ट खत्म हो गया तो दरवाजा बंद और फुल्ली बंद। खुल गया। देखो घोस्ट भी एकदम खुश है। A worthy playmate. Well done, me. Potato. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Barbara. Stupid one. Confringo. Nintendo. Expelliarmus. Potato. Stupid one. Lumos. Bombarder. Defender. Confringo. Lumos. ये क्या नेपोलियन जैसा दिखने वाला बंदा? निखिल अभी उठा था सोकर। मैं बॉडी को पीट दूंगा सर जी, ये मेरी नहीं सुन रही। बॉडी की हमारी नहीं सुनती ना, बहुत कम बॉडी हमारी सुनती है, हमें बॉडी की सुननी पड़ती है। बॉडी हमारी सुनेगी उसके लिए बहुत हाई लेवल की तपस्या चाहिए होगी। भाई बहुत बड़ा लेवल है ये। Revelio. इसको वापस एंटरटेन करना पड़ेगा। Time to raise the stakes, so to speak. Where shall I put this? Now that should get your attention. Well, this has been fun. Much to do, much to do. See you in a bit. अरे अभी भी बाकी है। Return to the foyer. ये इतनी बड़ी बड़ी शॉप के अंदर वो एक ट्रंक जैसा है। ट्रंक में बहुत जगह होता है।
फाइनल वाला भी खुल गया, इसीलिए इसको इतना सस्ते में मिल गया. हाँ. There is no catch, there is no catch, there is always a catch. कोई अगर जेन्युइन बंदा रहेगा तो भी ना वो फेयर प्राइस चाहेगा हमेशा. Revelio. मेहनत किया है तो क्यों नहीं चाहेगा फेयर प्राइस. Lumos. That is why there is always a catch. बहुत ज़्यादा अगर अट्रैक्टिव कुछ ऐसा दिखता है कि हाँ इनफेरी वेनफेरी से फाइट करनी है. एक तो रेड कुछ दिख भी रहा है. Lumos. लेफ्ट साइड में. Aha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh, tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for, say, 1 day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! Catch is catch, but catch, I mean. अरे तो ट्रोल है. Potato. Stupid one. खत्म भी हो गया. अच्छा नहीं, ये फर्स्ट फेज था. Try seeing things from my point of view. अरे भाई भाई. Well, finally. Someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. I must say, I enjoy a good challenge. Ah, a kindred, dare I say, spirit. So, about the contract. I am a poltergeist of my word. I'm a poltergeist of my word. Just to be clear, what does this agreement entail, specifically? Pay attention. You guarantee that I can have my fun at least 1 day each month without fuss. I let you work the rest of the time, mostly in peace. Why would you enter into such an agreement?
Much as I love banging about the place, it's no comparison to seeing customers' faces when I bonk them on the heads with a chocolate frog. One doesn't really understand the value of an audience until one is without it. ये इसको कितनी बार हराना है? ये बड़ा ट्रोल मॉन्स्टर, उसको तो 3 बार हराना है। पूरा घूम गया था, पूरा पर्सपेक्टिव वाला, मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, पूरा घुमा दिया उसने। I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of 1? I would. Pleasure doing business with you. You've worn me out. Well done. I had a feeling about you. I have to admit, Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. Cassandra का ये पूरा कांड था। Revelio. Fastidious. इसके हस्बैंड का नाम तो कुछ और था। नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, मुझे लगा पीछे कुछ होगा शायद। चलो यहाँ से चलते हैं ऊपर। Revelio. देखता हूँ कितना बाकी है, उस बेसिस पे आज कंप्लीट करूँ थोड़ा और खेल के। 12-1 बज जाएगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Speak to Penny. Hello, Penny. Penny is so glad you're back. You knew exactly where I was going when I entered that chest. Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? I think you should explain, Penny. Penny, please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased this shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. You should have told me the truth and punished yourself as necessary. I need to go and find Officer Singer. Penny is so sorry. Penny wanted to tell you everything. Truly. Surely Officer Singer will know what to do. Penny will wait right here. मुझे एक जगह पे पता था कि ऐसा कुछ दुकान मिलने वाला है, बट ये सब घटना होने वाली है ये नहीं पता था। ये तो बहुत एपिक एक्सपीरियंस था भाई। I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop. I am perfectly capable of owning a shop. But more importantly, did you not hear the bit about the dungeon? No, I heard that bit too. And, according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before. Repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? चलो। कहाँ पे?
Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Cassandra, it's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now, they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. Stop her! What on earth are they teaching you at that school these days? I should have known better than to do business with a wily student. Expelliarmus! Hang on! What on earth are they teaching you at that school these days? Let's go. भाई ये एकदम suddenly evil बन गई. I'm disappointed in you, Cassandra. Incarcerate! You don't know what you're doing! Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Checking that house elf of yours, she's probably terrified. Scrawny little traitor herself! I should have known it was... Silencio. वो बोले जा रही है but आवाज नहीं आ रहा उसके मुंह से. Oh, and not to worry. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and the elf. On her way to Azkaban. Thank you, Officer Singer. Best of luck to you as the newest shop owner in Hogsmeade. Let's go. अरे म्यूजिक ऊपर से वाइब एंड एनवायरनमेंट हेवन. डाइंग लाइट लूं कि कोई बैटलफील्ड का गेम. डाइंग लाइट मेरा तो बहुत ही फेवरेट गेम है. बैटलफील्ड का गेम मैंने खेला नहीं है तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता. और डाइंग लाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. उसका पार्कोर वगैरह बहुत मज़ेदार है, सेटिस्फाइंग है. इनिशियली ज़ॉम्बीज़ को मारने में इतनी तकलीफ लगती है, फिर धीरे 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 अपने आप को ग्रो करो. कैसे ग्रो करना है वो तो खेल खेल की पता चलेगा. ज़ॉम्बीज़ वाला है तो वो देख लेना. तुम्हें अगर ज़ॉम्बीज़ वगैरह पसंद नहीं रहेगा तो शायद उतना अच्छा ना लगे. इन जनरल पार्कोर वगैरह उसमें है तो बिल्डिंग से बिल्डिंग जाना आना वो सब बहुत अच्छे से कर सकते हो. Penny, I have what I hope will be good बहुत news. जबरदस्त लेवल था और ये साइड क्वेस्ट का पार्ट है. That ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved. Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. I look forward to working with you. All that's left is for you to choose a sign for your new shop, and Penny will take care of the rest. Sign Vesters and Venom, Gladwell and Brewster, Stitches and Trots. I choose Vestas and Venom. Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's inventory. Oh, and Penny, we'll be closing the shop by 9 o'clock every night. हाँ, क्योंकि 9 के बाद वो आएगा बहुत. Revelio. Vesters and Venom.
अच्छा इनके वैल्यू मुझे अभी ज्यादा मिलेंगे। जो भी बेचूंगा उनका वैल्यू मुझे अभी ज्यादा मिलेगा। Oh, Penny will fetch a good price for what you'd like to sell. Penny wishes you safe and wondrous travels. Unidentified head item, ठीक है। ये अपना दुकान हो गया। अभी एक बार देख लेता हूँ क्योंकि डिनर के लिए बुलावा आ चुका है। क्वेस्ट, साइड क्वेस्ट भी बाकी है ना। कलेक्शंस अभी भी 7 मिशंस बाकी है। नहीं होगा, टाइम लगेगा। साइड क्वेस्ट मेरे 32 बाकी है, टाइम लगेगा। 7 मेन क्वेस्ट्स। इधर जाऊंगा तो अभी 3 यहाँ पे क्वेस्ट बाकी हैं, फिर ये साइड मिशंस भी है। लेट्स गो। नेक्स्ट वीक ही कंप्लीट करना पड़ेगा। काफी सारे मिशंस हैं। अभी इसको बंद कर देता हूँ। मैंने अलग से क्यों रखा था, जो भी है अभी के लिए रखता हूँ। चलते हैं आगे, मतलब डिनर के लिए बढ़ता हूँ। भूख भी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। लास्ट वाला मिशन बहुत लंबा था बट मजा आया खेलने में। बहुत अनोखा मिशन था, फन था बहुत। बाकी तो और भी इसके स्टोरी क्वेस्ट बाकी है, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक ही खेलेंगे। नहीं तो देखता हूँ क्या करें, कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो उस हिसाब से कुछ प्लान करके इसको वीकडे में ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, चलेगा ये अच्छा खासा। Anyway, thank you so much for joining in. See you tomorrow. Take care. Good night and bye bye. आज तक ना देखे जान तेरे तहा गेम प्रोफेसर सौमिक सुपरस्टार हॉगवर्ट्स लेगेसी मोबाइल GTA फास्ट हो जाने वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर। गेम ऑन सौमिक अपने स्टाइल से दबा के गेम पर पट्टी। तेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 4 चांद लगाए। गेम ऑन सौमिक आज दूर है दिल में। Professor Souvik है सुपर गेमर। Apex Legends COD मोबाइल GTA 5 को जाने, वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर।